चलिए सर. Hey champions, commandos, we are back with the analysis of that we have done in the morning for forenoon session, and what all our panel has decided after so much of discussion that the cutoff for morning session will be around 30 to 34 marks. Might be plus minus 1 or 2, but not more than that. Right. And if we compare the sessions of last year morning and evening are almost same. Even in the scaling also that does not reflect much, almost same. So this year for morning session compared to last year, because last year paper haddi easy aa gaya tha bhai. This year also we are not saying tough, but this year compared to last year little bit of more tricky, because दिस ईयर को ट्रिकी कहना इतना सही नहीं होगा. लास्ट ईयर बहुत इजी था. लास्ट ईयर बहुत इजी था. ये गेट का नॉर्मल लेवल है. ये गेट का नॉर्मल है, मतलब मॉडरेट, इसलिए हम बोल सकते हैं. दिस ईयर वी कांट से दैट इट इज सो मच टफ, सो मच इजी. इट वाज मॉडरेट, बट लास्ट ईयर इट इज वेरी वेरी इजी. सो कंपैरेटिवली इट इज मोर टफ. सो कट ऑफ विल बी अराउंड 30 to 34 मार्क्स. और अगर पीएसयू और एमटेक के लिए बात करें तो अगर लास्ट ईयर इफ यू आर स्कोरिंग इवन लेस 2 or 3 marks less, then also the same IIT, same branch, same PSU you can get, irrespective of same number of seats are coming for PSU. MTech में तो same seat रहेगा almost. Okay. So over to you, sir. Ansari sir, agar. Yeah, same thing. Actually, we did the analysis. The whole team sat down, and whatever the questions we have received, till on the basis of that only we have decided that this time also the cutoff will be. Although I was thinking that it's a little bit easier, but not easier, because few of the questions were in such a way that it will take time. So we have concluded that it's a kind of moderate only, and compared to the last year it is easier. Yes, that compared to the last year it is tough actually. So whatever you were expecting the last year with compared to previous year, we will say that you are going to get better rank if you are going to get the same marks in this situation. So that's all. And this evening session also we are eagerly looking forward, and whatever the questions we'll get, and all the analysis also will be bringing in front of you. So over to Niru sir. So everybody please quickly like the session, hit the like button and share the session with everybody quickly. So we on behalf of Gradeup is quickly, just within a few minutes, bringing before you for the first time in India, just like the morning session, the full analysis of GATE 2021 afternoon session. Just stay tuned and keep on watching, and just hit the like button and share the session with everybody so that everyone in India can watch the session together. What about? And one more thing, my guys, the link of PDF for the morning session will be in the description box, and for the afternoon this session also will be soon providing in the description box. So complete, accurate, detailed solution will be available. You don't have to go anywhere else. Here in the comment section you will be getting, and soon we'll be telling you the weightage. Dipanshu hai? हो गया. See यार, come on, what's the time? 6 बजे एग्जाम खत्म हुआ. Yes. 6-8 हो रहे हैं. बात कराते तुम्हें बच्चों से डायरेक्ट आफ्टर जस्ट 5 minutes. Yes. Okay, लाउड स्पीकर में डालो भाई. Fastest, more fast. Rajnikant also I think we have beat. Yes. So everybody फटाफट से guys just share the session, because we have directly from the center we have the news, we have the data that faster what than kind Rajnikant. of faster than Rajnikant. All right, so everybody just share this video with your friends in your WhatsApp group, on your Facebook profile, and hit the like button. And I am making the student on. Okay, so Dipanshu, you are live on channel. So first of all, one word about the paper. How was that according to the level? What was the level? स्पीकर पे हैं भाई आप लोग. हाँ भाई स्पीकर पे हो, थोड़ा आराम से. पेपर वाज मॉडरेट. मॉडरेट. ओके सर, ये भी मॉडरेट है. एमएसक्यू कितने क्वेश्चन आए थे दीपांशु? सर एमएसक्यू हार्डली कोई था. मतलब ओके सर, एक्चुअली मतलब जीरो था कि 1 या 2 थे? सर लास्ट के 2-3 क्वेश्चन तक मैं पहुंचा नहीं. अगर उसमें शुरुआत के 50 क्वेश्चंस में एक भी एमएसक्यू नहीं था. Okay, so the student which we are talking, he has not completed all the questions. Last 4-5 questions, if there were MSQ, then it is another case. Otherwise, he has attempted 60 to 62 questions. Till then, there was no MSQ. So might be, अगर ज़्यादा it might be only one MSQ. And what is the difficulty level of maths and aptitude? Sir, aptitude was damn easy, and math was also easy at parts. But the overall math was also easy. What about the newly added topic? Any newly added topic? Lateral load, pile capacity, Yes, या degree of freedom. From the newly added topics, there were 2 questions of frequency,
and which was हमने not there in हमने लेक्चर कंडक्ट भी करा था. Just guys, let me tell you, Krishna sir has taken marathon just 4 days before, and that session suddenly sir has called, and suddenly sir नहीं मेरे को सेशन लेना है सर. सर और मेरे ख्याल से एक दिन आपका लाइट भी चला गया था और फिर अगले दिन सेशन लिया और वहीं से क्वेश्चन आ गया. लो भाई, और मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस मतलब भोकाली मचा दिए भाई. So guys, the summary till this point is the exam was moderate, and secondly MSQ was hardly any MSQ have been asked. I think one MSQ was there, and the paper was calculative. Aptitude was very easy, and your mathematics, it was comparatively easy if you talk about. दीपांशु सबसे ज्यादा किससे, सोम से, सॉइल से, एनवायरनमेंट से, किससे सबसे ज्यादा आया? soil and environment. सॉइल एनवायरनमेंट. मॉर्निंग जस्ट लाइक मॉर्निंग. अच्छा, मॉर्निंग में हाइड्रोलॉजी के क्वेश्चन बिल्कुल नहीं थे. इसमें हाइड्रोलॉजी के क्वेश्चन आए थे क्या? यस सर, हाइड्रोलॉजी के इसमें 2-3 क्वेश्चन थे, बट सर जो क्वेश्चन थे सर वो बहुत इजी थे. एक पहला क्वेश्चन था कि एक ट्रायंगुलर शेप का हाइड्रोग्राफ होता है, तो उसमें एरिया ऑफ कैचमेंट निकालना था, एंड देन द सेकंड क्वेश्चन वाज दैट फाई इंडेक्स निकालना था. ओके, तो एरिया ऑफ हाइड्रोग्राफ इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर करके एरिया आ जाएगा. एग्जैक्टली सर. और फाई इंडेक्स वो अज्यूम करके कि इससे और इसकी रेंज में है, उसी रेंज में अटक गया तो वही आंसर है, नहीं तो दूसरी रेंज ले लो. Right. यस सर. ओके, आपके पास क्या डिस्ट्रीब्यूशन है क्या 1 मार्क्स या 2 मार्क्स का? नो सर वो नहीं है सर. ओके ओके ओके, No problem. चलिए. No problem. Thank you very much. Thank you. So guys, you just have got the report, right? So. Just you have to wait for some time, guys. Definitely you will able to solve the different type of problem which is came in your examination. तो बच्चों सिंपल सी बात है भाई, मैंने लास्ट कुछ 4-5 दिन पहले एक सेशन लिया था, that is of our engineering dynamics and which is based on vibration portion, and I have solved lot of questions over there, so that definitely you are able to solve such type of problem in your examination. भाई बहुत तगड़े तरीके से पढ़ाया था मैंने, बेसिक से पढ़ाया था उस सब्जेक्ट, उस टॉपिक को, और मैंने यूट्यूब पे फ्री पढ़ाया था बच्चों, ताकि आप लोग उस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चंस बना सकें. राइट, सो यस, सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम, सूरज भी बोल रहे हैं सर, हाँ सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम से पूछा था और पढ़ाया भी था. So definitely guys, I think a lot of students will have to get benefit from that particular session, and no doubt environment से भी बहुत क्वेश्चन आए हैं. बस थोड़ी ही देर में बच्चों हम लोग आपके साथ लाइव वापस से इसी पर्टिकुलर YouTube पे हम लोग बात करेंगे बच्चों इन्हीं क्वेश्चंस की जो आपके अभी सेशन में आए हैं, और आपको PDF भी मिल जाएगा जो कि आपके फोन सेशन में हुआ था. ठीक है. See, one our paid user who was our vision student, he was from IIT Madras, BTech IIT, and IIT Madras, MTech was also from IIT Madras. He is where. Hi USK, you are in speaker in live in YouTube. Hello everyone. Hello, you are live and you are everybody is listening to you. The whole India is listening to you. So how was the paper? Paper was easy, sir. Okay. paper was easy. How many number of MSQ questions? Because in morning session we have hardly any MSQ. I searched for MSQ in the paper. Only 1 or 2 questions. Again 1 or 2 only MSQ. Okay, so there are very less MSQ questions. And papers lengthy, easy, moderate, tough, very easy. Paper was easy to moderate, sir. Easy to moderate. And all the geotechnical questions were easy. Okay. And environmental, I felt a bit it was a bit tough, sir. Environmental questions. Okay. Overall, the paper was easy, sir. The mathematics portion and aptitude was. So it was more of conceptual or this like calculative, conceptual, theoretical, or just like all any other gate paper. Conceptual plus calculative, sir. Around 80% was conceptual and calculative. Okay. Only 10 to 20% was theory based. Okay. Thank you. I'll catch you later, USK Baba. Thank you. Okay, so this was USK Baba, our paid user. Over to you, Anuj sir. So please quickly. And one more thing, Yeah. just within 15 minutes ना क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट होने वाले हैं. फास्टेस्ट, मोर फास्टेस्ट देन रजनीकांत. 1106 है क्या ये? I think it is 1106 in 30 minutes. भाई Okay, that I'm sure. भाई जल्दी से शेयर कर दो यार, ऐसे नहीं चलेगा भाई. बहुत मेहनत हमने देखा बैकएंड में, क्वेश्चंस कलेक्ट करने में, सॉल्व करने में. अभिनव सर, अनिरुद्ध सर, जोशित सर, शुभम सर, और बताऊं आपको मॉर्निंग से लगे हुए हैं रात से ही लगे हुए सर. तो और आपके साथ बता दूं, सर के साथ 50 लोगों की टीम है जो दिख नहीं रही, वो बैकएंड पे उनकी
हेल्प करने के लिए लगे हुए हैं। किनके लिए? आप लोगों के लिए। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्लीज शेयर अमॉन्ग ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स, माय डियर फ्रेंड, प्लीज शेयर अमॉन्ग ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स एंड join this session as soon as possible and hit the like button, my dear friend. 125 people are watching, only 60-70 like. How is it possible, sir? See, today genuinely from my heart I'm saying, yaar, like it's your wish, but just share this because we will be the fastest within 10 minutes ना. Our typing team ठक 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 10 मिनट के बाद यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहा होगा हम में से कोई फैकल्टी, ठीक है? This is my promise to all of you. Yes, still then Anirudh sir will be taking care of you and will be coming with questions and weightage analysis also within few minutes. Okay, so thank you everybody. Over to you, sir. So just quickly let me know in the chat section, everybody, those people who had their examinations in the afternoon session, quickly let me know in the chat section that how was your examination? How was your examination? Quickly let me know in the chat section. Is it moderate? Is it tough? And how Gradeup actually helped you people? So anybody in the live chat section, I'm just waiting for all of you. Quickly hit the like button and share the session with everybody. I know that if it's tough for you, some people are saying it's tough, boss. If it is tough for you, it is tough for everybody. So don't worry at all. If it is tough for you, it's tough for everybody because gate is boss relative. So don't worry at all. Okay, yeah, actually in this moderate, yes, everybody is saying moderate, not tough. Very good, Naidu. So within 10-15 minutes, we will be coming with the exclusive in the first in India actually to bring before you the entire questions with a full solution. The detailed solutions will be coming just quickly by the time. जल्दी से जल्दी लाइक कर दो सेशन को और शेयर कर दो सारे दोस्तों के साथ, so that everybody can enjoy this wonderful session. Quickly दोस्त, quickly in just 10-15 minutes we are coming live with the questions over here. तब तक के लिए जल्दी से जल्दी लाइक कर दो, शेयर कर दो सारे दोस्तों के साथ। तो फिर आज का पेपर जो है बहुत आप लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि मॉडरेट लेवल रहा है। तो इस बार जो था हमें सर थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ था गेट का, सर इस वजह से थोड़ा सा कंफ्यूज थे, नर्वस भी थे कि इस बार कैसा नया तो कुछ देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे कि एमएसक्यू के बारे में बोले थे कि एमएसक्यू के क्वेश्चन तब तक आया ही नहीं लगभग, और एमएसक्यू तो सुबह भी शायद 4-5 ही आए और अभी तो लगभग 2 और नहीं, मतलब अभी तो खैर वो उसने तो कह दिया कि अभी है ही नहीं। देन आल्सो वी आस्क्ड हिम एंड दे आर सेइंग दैट इन फर्स्ट 50 क्वेश्चंस दे फॉन कोई भी एक हमें नहीं मिला है। और अब मुझे लगता है कि एमएसक्यू को लेके बहुत ज्यादा आपको टेंशन नहीं लेनी चाहिए, ठीक है ना? हमें जो मेन फोकस करना है अभी, हम एक मेमोरी बेस पे कर सकते हैं और एनएटी टाइप क्वेश्चन पे कर सकते हैं। एग्जैक्टली, ठीक है। तो अगर एमएसक्यू को लेके अगर आप में मन में अभी भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, वैसे हम लोग उसके लिए भी रेडी हैं और क्वेश्चंस भी हम आप लोगों के लिए सॉल्व कर रहे हैं लगातार। लेकिन तब तक मैं चाहूंगा कि 2 काम हम लोग रेडी करें, पैरेलली करते रहे, ठीक है ना? और इस चीज में सबसे बड़ी चीज ये रहेगी कि आप सबसे पहले तो हमें ये भी बताइए कि जैसे सुबह आपने सेशन अटेंड किया होगा, आपने सुबह का एनालिसिस भी देखा होगा, अभी हम दिन का एनालिसिस करने जा रहे हैं। सुबह का एनालिसिस का फुल पीडीएफ जस्ट यू विल गेट इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द मॉर्निंग सेशन वीडियो। तो डिस्क्रिप्शन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसकी डिस्क्रिप्शन में भी हम लगवा देंगे, ठीक है? तो आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसका डिटेल्ड सोल्यूशन सारे फैकल्टीज ने आप लोगों के लिए अटैच करा दिया उसके अंदर, और एक प्रॉपर वे में आप लोगों को पूरा सोल्यूशन मिल जाएगा। पीडीएफ अपना डाउनलोड करिए। इस सेशन का भी पीडीएफ ऐसे ही आपको टेलीग्राम ग्रुप्स में भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वेबसाइट पे भी दे देंगे हम और डिस्क्रिप्शन में भी लगा देंगे, ठीक है? तो मतलब उसमें आपको ये नहीं है कि जो भी हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं और आपको लिखना है, इतना कुछ नहीं करना है, ठीक है ना? अच्छा, दूसरी चीज आपको ये भी देखनी है कि जो कट ऑफ है सर, कट ऑफ के बारे में पूछ रहे हैं। तो कट ऑफ सर, अगर मैं पिछले साल का कंपेयर करूं, पिछले साल 32 वाज द कट ऑफ, बट पिछले साल के मुताबिक दिस ईयर एक्चुअली द क्वेश्चन इज लिटिल बिट टफर। हाँ, लिटिल बिट टफर। तो सर कट ऑफ जो है आप मान सकते हो अराउंड 29-30। हाँ, वो 1-2 मार्क्स 29-30, मतलब 1-2 मार्क्स। And frankly speaking, if your marks is above 65, if your marks is above 65, boss, तब तो boss you are in a very good position in this year. 65 to 70, if you are in a if your score is coming, just you will get to know what's going to be your score actually, because we are going to start the analysis just in a few minutes. By that time, quickly hit the like button and share the session with everybody. दूसरी बात, एक चीज ये भी देखने को मिलेगी हमें कि अभी हम एनालिसिस करेंगे तो इससे भी हमें क्वेश्चंस मिलेंगे, इससे भी क्वेश्चन देखेंगे कि हम बेसिकली कि कैसे जो लेवल है वो, जैसे कि आप हो सकता है नेक्स्ट ईयर आप एग्जामिनेशन देने जाएं और आपका हो सकता है सेकंड शिफ्ट में पेपर हो,
ठीक है, हो सकता है फर्स्ट शिफ्ट में भी हो, लेकिन वी आर अज्यूमिंग कि सेकंड शिफ्ट में हो, ठीक है। तो अभी सुबह का सेशन देखा, दिन का सेशन देखेंगे तो हम बेसिकली ये चेंज भी देख सकते हैं कि सुबह से शाम के सेशन में या फिर जब आपका सेकंड सेशन में अगर आपका पेपर होता है तो किस तरह से लेवल में चेंज देखने को मिलता है। तो हम नेक्स्ट ईयर भी जैसे कि अब पेपर होगा तो आप लोगों के लिए एनालिसिस करेंगे ही करेंगे, आपके लिए सॉल्व करेंगे ही करेंगे, वो हमारी जिम्मेदारी है, हमारी ड्यूटी है, तो हम वो करेंगे आप लोगों के लिए। लेकिन ये सबसे बड़ी चीज ये होगी कि हमें ये समझना जरूरी है कि किस तरह से सेशन में जो चेंजेस हैं वो चेंजेस कैसे आते हैं। बस अगर आपका सेशन मान लेते हैं कि शिफ्ट आपका इवनिंग शिफ्ट आ जाता है, तो इवनिंग शिफ्ट में आपको नर्वस होने की जरूरत है या नर्वस होने की नहीं भी जरूरत है, कैसी जरूरत है। ओके, तो आई वांट टू आस्क यू एनीथिंग, वन क्वेश्चन इज वेरी वेल आई एम आस्किंग यू दैट कि सुबह का पेपर आप लोगों को कैसा लगा, मीडियम लगा, टफ लगा या मॉडरेट लगा? ठीक है, आप सभी लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि सुबह का सेशन आप लोगों को मीडियम लगा, टफ लगा या मॉडरेट लगा। ठीक है ना, वैसे हम इसको भी सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, आई विल टेक अराउंड 5 मिनट्स ऑफ यू, इससे ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा मैं। ठीक है ना, 5 मिनट से ज्यादा का समय नहीं लूंगा क्योंकि ऑल आपके लिए सॉल्यूशंस तैयार किए जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं कि आप मुझे ये बताएं कि कितना, मतलब आपको कैसा लग रहा है पेपर, आपके हिसाब से, आपकी तैयारी के हिसाब से, कि मॉडरेट लग रहा है, सिंपल लग रहा है, इजी लग रहा है, कैसा लग रहा है? ठीक है, मुझे लगता है कि यहाँ पे सुमित दास जी कह रहे हैं मॉडरेट है, हिमांशु कह रहे हैं कि मॉडरेट है। ओके, ठीक है, मॉडरेट है। ठीक है, तो हमें भी ऐसा ही कुछ मॉडरेट जैसा ही लगा है, मीडियम लगा है। तो अमित कुमार जी, जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल हो सकता है आप पेपर देने गए हो सकता है कि आप देने जाएंगे, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। ठीक है, तो क्या लगता है कि अगर आप ही खुद पेपर देने जा रहे हैं तो कितना स्कोर कर सकते हैं? जैसे सुबह वाली शिफ्ट हो सकता है आप, कुछ बच्चे ऐसे भी हों जो दे के आए हों और अभी एनालिसिस में बैठे हैं देखने के लिए एनालिसिस। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि अगर जो सुबह का जो पेपर हुआ था उसमें आप कितना स्कोर कर सकते थे आउट ऑफ 100? 60, 50, 55, 62, हाउ मच? सर और एक चीज जो है, बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि सर मॉर्निंग सेशन में एक टाइप ऑफ क्वेश्चन आया, इवनिंग सेशन में एक टाइप ऑफ क्वेश्चन आया, तो बेसिकली बॉस इट्स गोइंग टू बी नॉर्मलाइज्ड हो जाता है अल्टीमेटली, जो नॉर्मलाइज मार्क्स मिलता है। सो अगर आपको टफ लग रहा है, इफ यू आर फीलिंग सर इट्स टफ, इफ यू आर फीलिंग दैट इट्स गोइंग टू बी वेरी इजी, तो वो नॉर्मलाइज किया जाता है, तो एवरीवन इज गोइंग टू गेट that kind amount of marks tech actually. movies sir, ये कह रहे हैं 50 55 we are getting the answer. ठीक है, Saurav is saying 75. Okay, very nice. Yeah. Okay, 75 is very good, man. Very good. Especially if in this year actually 75 is a good marks. And Santosh is saying around 30. So Santosh, I think we need to work together and थोड़ा सा हम स्कोर अप कर लेंगे इस चीज को। ठीक है, और we will go to above, we have to try to go above 60 anyhow. ठीक है, हमें कोशिश करनी कि हर हाल में हमें 60 से ऊपर तो जाना ही है। और 75 अगर जैसे कॉन्फिडेंटली भाई ने बोला हमारे सौरभ ने कि 75, देन तो इट इज। सो अंबर इज सेइंग 65 प्लस, वेरी गुड, वेरी गुड। अंबर इज सेइंग 65 प्लस, वेरी गुड। तो स्पेशली इन दिस ईयर 65 प्लस इज अ वेरी गुड मार्क्स, वेरी गुड मार्क्स एक्चुअली। 65 यू कैन गेट गुड मार्क्स। यस। तो दोस्त हम लोग का अभी आ रहा है दोस्त, इन अ वेरी वेरी क्विक, ओनली इन 10-15 मिनट्स आवर डीटीपी टीम इज जस्ट टाइपिंग लाइक रॉकेट, ओके, सो दैट वी कैन सेइंग सर लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी कंसोलिडेटेड सीयू टेस्ट होता है ना, सीयू तो कंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड, कंसोलिडेट हो गया, अभी अनड्रेन हुई है, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड। ठीक है, तो ये अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड तो लॉन्ग टर्म हो गया ना। नहीं, तो क्विक टेस्ट होता है, यूयू टेस्ट तो सही बोला। क्विक टेस्ट होता है। ठीक है, सीडी टेस्ट हो जाएगा आपका लॉन्ग टर्म टेस्ट, कंसोलिडेटेड भी हो रहा है, ड्रेन्ड भी हो रहा है, टाइम लग रहा है लॉन्ग टर्म सीडी टेस्ट। ठीक है, तो आप यूडी पॉसिबल नहीं है, अनकंसोलिडेटेड ड्रेन पॉसिबल नहीं सीडी है। ये इसने तो सीयू डाला है ना, कंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड। हाँ, तो ये हमारा, ये तो हम वैसे भी उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ डैम्स वगैरह की। Yes sir, this is a shear strength चैप्टर में हम ये पढ़ते हैं एक्चुअली। There are 3 types of tests, जो ट्रायंगल टेस्ट। तो सीयू टेस्ट हमारा इस चीज पे हो जाएगा कि हम स्टेबिलिटी ऑफ डैम्स वगैरह के लिए इसका यूज करते हैं। ठीक है, बेसिकली हम लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म स्टेबिलिटी के लिए चेक नहीं करते हैं। यस। ठीक है, वो हम वहाँ पे उसकी पर्टिकुलरली आप ऐसा कह सकते हैं कि जो सीयू टेस्ट है हम वहाँ पे डैम्स वगैरह की। रामाकृष्ण इज सेइंग हाउ मेनी एमएसक्यूज इन शिफ्ट टू ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। ओके, इट्स negligible. So by that time, man, quickly hit the like button and share the session with everybody. Chaitanya is saying 40.
Okay, 40. Okay, 40. You will definitely going to get qualifying marks definitely. 45, 40. 40 and 45 also. I know that most of the people. एक सर मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा हम लोग जो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हो सकते हैं जो कॉलेज में हो अभी. हाँ. ठीक है, तो कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा एक हो सकता है कि हम कुछ गाइड कर सकें. So the point is that actually I think what I was feeling that some students are also in third years because third year is allowed. One student has written Amber is saying okay. I am from third year. Okay, fine, sir. So Amber, you are in third year. So your marks is also going to be valid in the future year as well. Harsh is saying 50. Okay, 50 is what do you think about electronics paper? Electronics तो हम लोग नहीं जानते दोस्त. लेकिन सर कॉलेज के स्टूडेंट्स को मेरी सबसे अच्छी एडवाइस यही मैं एक दे सकता हूँ. Aptitude was superb. Okay, fine, very good. तो एप्टीट्यूड वो सुपर और साथ के साथ कॉलेज के स्टूडेंट्स जो हैं सर इनके पास बहुत टाइम है एक्चुअली मुझे लगता है इस बार कट ऑफ इंक्रीज नहीं हो सकता. तो कट ऑफ घट जाएगा इस बार, घट जाएगा क्योंकि पिछले बार के मुताबिक इस बार पेपर थोड़ा टफ हुआ है. तो इस बार 1-2 मार्क्स का वेरिएशन 30 आप होके मिलेगा. यस 29 to 30 डाउन मतलब वैसे 29 to 30 हो जाएगा सर. तो हमें जो है वहां पे पहले 32 देखने को मिल रहा था, तो अभी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 29 से अप और 31 के नीचे, मतलब 30 के आसपास ही हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं. इससे ना ज्यादा ना कम. विनोद सिंह क्या बोल रहे हैं? प्रियदर्शनी सेइंग एप्टीट्यूड वाज वेरी इजी. ओके प्रियदर्शनी, वेरी गुड. सर जी आंसर रट के गए थे, क्वेश्चन फोड़ दिया उस आंसर को. क्या बात है दोस्त, बढ़िया दोस्त. कौन सा एप्टीट्यूड का? नहीं, विनोद जी बोल रहे हैं सर जी आंसर रट के गए थे, एक क्वेश्चन फोड़ दिया उस आंसर क्वेश्चन को. भाई क्वेश्चन को फोड़ दिया, क्वेश्चन को तो फोड़ नहीं दिया ना दोस्त. लैपटॉप मतलब जो स्क्रीन है वो ठीक ठाक था ना दोस्त, समझ रहे हो? ऐसा नहीं करना है यार दोस्त कि जोश में आके भैया फोड़ ही दिए लैपटॉप को. ऐसा तो नहीं किया ना. चलो गुरु बढ़िया है. बाय द टाइम मैन क्विकली. लेकिन गेट का पेपर सर ऑलमोस्ट मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि हम सब्जेक्ट्स को अगर कंपेयर करें थोड़ा सा, ठीक है, सॉइल मैकेनिक्स हो गया, ठीक है, फ्रॉम द रिस्पेक्टेड फील्ड जहां से. Yes, actually the point is that what I was also thinking that if I check the morning session that 15 marks was from environmental engineering. 15 marks was from environmental engineering. मतलब थोड़ा ज्यादा एक्सपेक्टेशन से. नॉर्मली जो सॉइल और एनवायरमेंट सबसे ज्यादा रहता है. जियोटेक वाज आई थिंक अभी सेकंड शिफ्ट में भी सबसे ज्यादा एनवायरमेंट और सॉइल ही रहा है. Yes sir, that is also all the expected actually. Should I give GATE next year also or 65 plus enough for top IIT? If you are getting 65 plus this year, Amber, so definitely it's going to be great. I think you are going to get in top IITs. Okay, really इस बार टफ था. मुझे फील हो रहा है कि हिस्ट्री का सबसे इजी क्वेश्चंस थे. मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था. I was so worried. Okay, निशा, very good निशा. It's glad पहले to hear अटेम्प्ट में from. मतलब अगर आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं, फिर तो सेकंड अटेम्प्ट में you can do very great. Second shift seemed to be very easy. Why always set 1 is easy? दोस्त ऐसे दोस्त आप जो सेट 2 देता है दोस्त, इसको लगता है वो सेट 1 इजी है, और जो सेट 1 देता है उसको लगता है सेट 2 इजी है. सबको अपना वाला टफ लगता है. ये होता है सर, नॉर्मल होता है ये. हम जब एग्जाम दिए तो हमको लगा था शिफ्ट 1 था मेरा, तो आई थॉट दैट शिफ्ट 2 वाले जो है ना सर, उसका एकदम मतलब बहुत ही ये क्वेश्चन आ गया सर. इट्स नॉट लाइक दैट. ओके, सो ऑल मार्क्स इज गोइंग टू बी नॉर्मलाइज. सर मेयर ऑफ एसेंट्रिक से आया था. ओके, इनके लिए टेबल एक ये प्रिपेयर कर दिया है. Yes. So just in a few minutes. By the time, man, please hit the like button. पूरा एनालिसिस एक्चुअली हम कर रहे हैं. हम नहीं चाहते कि आपको गलत डेटा दें, इसीलिए इस पूरे टेबल को बैकग्राउंड में हमने तैयार कर दिया. नाउ वी आर गोइंग टू फिल हाउ मेनी मार्क्स ट्रांसपोर्टेशन हैज बीन आस्क्ड एंड 1 मार्क्स का कितना आया था, 2 मार्क्स का कितना आया था. ठीक है, तो 1 और 2 मार्क्स का टोटल हम देखने की कोशिश करेंगे. ठीक है, और समझने की कोशिश करेंगे कि बेसिकली कि सुबह से कितना ज्यादा वेरिएशन था सेकंड वाली शिफ्ट में, ताकि अगर आपको कल को इस चीज को फेस भी करना पड़े तो यू आर मेंटली प्रिपेयर्ड. एंड frankly speaking, इस बार MSQ जो है वो जस्ट स्टार्ट हुआ है, इसलिए थोड़ा कम था. NAT 45 क्वेश्चंस. Oh my god, in which shift man? Avinash, 45 questions. NAT. Oh my god, I don't know. Some student was saying, one of my students, she's saying that 27 NAT questions were there, man. 27 NAT questions were there. 45 someone is saying. All the what? सर जी मैं अपना उसको 23rd मार्च को बताऊंगा. ठीक है सर, मैं भी बताऊंगा उस दिन. मतलब मैं भी पूछ लूंगा आपको. ठीक है सर. टॉप 100 कितना नंबर? सो सर मैन क्विकली हिट द लाइक बटन एंड शेयर द सेशन विद एवरीबॉडी. सर लेवल मॉडरेट टू हार्ड था. ओके, पेपर इजी ही आया था सर. ओके फाइन. शुभम इज सेइंग सर टॉप 100 के लिए कितना मार्क्स? सो इट्स ऑलमोस्ट 80.
80 मान सकते हो आप? 80 मान सकते हैं। 75 अब आप 75 to 80 If we man. are saying 65 as a good number, then 80 we can expect as top. Top 100, yeah, 75, more than 75 you can see. So Okay, so thank you sir. Engineer Adi is saying FN session. Before we start, आपके जो भी questions हैं आप पूछ सकते हैं। आप पूछ सकते हो दोस्त, because the typing team is typing actually the questions for all of us so that we can just begin the typing. तो बेसिकली जो भी नॉलेज हमारे पास अभी सेकंड शिफ्ट के लिए होगी, अगर आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन होगा, we'll answer. Definitely. चलो. So कह रहे सर कट ऑफ क्या लगता है कितना जाएगा? Cut off, I have told you, we have already discussed, it's 29 to 30 man. It is going to decrease. बहुत NAT था, देखो मैं करवाया हूँ सौमजीत, many people used to say in my sessions, last जो मैंने sessions लिया था, many people used to say, sir, where are the options? मैं बोला option नहीं दूंगा, लोग क्या करोगे? NAT. Only for MSQ था. You have to get prepared. Actually, when you are preparing for GATE, मतलब हमें लगता है कि आपको ऑप्शन के लिए ज्यादा वरी नहीं करना चाहिए. Exactly. You should go for concepts, ठीक है ना? और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको अपना आंसर ढूंढना है एक्चुअली ऑप्शन में. Exactly. Because आपको एक चीज शायद नहीं पता है या पता भी है, तो मैं थोड़ा सा नोटिस करा देता हूँ आपको कि जब भी GATE का क्वेश्चन बनाया जाता है तो उसके अंदर जहां पे भी आप गलती करते हैं बेसिकली उसी को सॉल्व करके आंसर भी दिया जाता है. If you will solve wrong, then also you will get the answer in the options. Yes, of course. तो बेसिकली आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, और अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है और आप बिल्कुल राइट तरीके से आंसर निकालते हैं तो आपका वाला ऑप्शन मिल जाएगा, वरना उनका वाला जो गलत वाला जो उन्होंने बना के दिया है वो वाला भी मिलेगा. So what they are writing is, sir, 55 plus can I expect old IITs? It's tough, boss. It's tough, boss. 55 plus में old IITs मिलना थोड़ा टफ है बॉस, frankly speaking. झूठ नहीं बोलूंगा, बट 60 प्लस होता तो बढ़िया होगा. रट्टा मारने वाला कुछ नहीं है सौमजीत. इट्स एक्सपेक्टेड. इट्स गेट मैन. इसमें रट्टा मारने वाला कुछ. Hashmi is saying environmental का कम था सर. Actually, are you from the afternoon session or the forenoon session? Yeah. Hashmi, because in forenoon session there were a lot of questions which were there. Around 12% was environmental engineering. No, 15%. Yeah. And 12% is geotechnical engineering. Yeah. But actually, Nitish is saying actually, but Nitish and other people, लास्ट क्लास रिलेटेड क्वेश्चन आया था. यस सर, मुझे आपकी याद आ रही थी एग्जाम में, मैंने तो ऑप्शन ही नहीं देखे, बट लास्ट में देखा कि ऑप्शन है या NAT जस्ट बिकॉज ऑफ यू. वाह क्या बात है. अतुल पांडे, थैंक यू अतुल. सो प्लास्टिक एनालिसिस में एक क्वेश्चन आया है. ओके फाइन. सो द पॉइंट इज दैट, बट इन द मॉर्निंग सेशन एक्चुअली आई वाज वाचिंग दैट वन क्वेश्चन वाज फ्रॉम एसेंट्रिसिटी. फ्लूइड से ज्यादा नहीं आया. फ्लूइड से तो एज एक्सपेक्टेड बहुत ज्यादा थे. एसेंट्रिक कनेक्शन सुबह वाला क्वेश्चन में, दैट आल्सो आई हैड taught in the last 50 mark series. Those people who have attended, that is very important question actually. Yeah. If you are going for giving examination and if you have not studied that particular section of the steel, then I think definitely you have not studied steel. Yeah. So my virtual calculator didn't work even after shifting. Oh my god, it's a bad luck, man. PSU कितने में मिलेगा? 75 plus मान के चलो for general category students. 75 plus I think you are going to have. 72 73 plus I think you can have. Okay, so Somajit, how was your exam? Let's studying from the different students. सर जी खराब गया मेरा एग्जाम, अब IAS प्रिपरेशन करूंगा. ठीक है सर, थोड़ा बताइए. ओके, डेफिनेटली वी आर आल्सो गोइंग टू लॉन्च सम IAS डेडिकेटेड कोर्सेज. अब ये वापस सही हो गया है कि अब ES का पेपर और थोड़ा सा गेट का पेपर में गैप, और उसके अंदर वी आर आल्सो लॉन्चिंग सम कोर्सेज ऑन ESE एक्सक्लूसिव, राइट? सो द पीपल आल्सो कैन जॉइन द ESE स्पेशल कोर्सेज. ये जो वर्कबुक बनाई है हमने इनके लिए, वो भी बहुत अच्छा एक कर दिया है. अभी तक क्या होता था, एक स्टूडेंट्स के साथ सर जनरली ये हमें देखने को मिलता था कि दे यूज्ड टू स्टडी वेरी वेल, बट इनको क्वालिटी क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू द गेट एंड ES एग्जामिनेशन नहीं हो पाता था. बट द टीम इज वर्किंग वेरी हार्ड एंड वी हैव प्रिपेयर्ड अ बुक ऑन, मतलब वर्कबुक बना दी हर सब्जेक्ट के ऊपर आपके लिए. ठीक है ना? एंड द स्टूडेंट्स विल बी स्टडिंग विद अस, दे विल गेट दैट बुक एंड दे कैन प्रैक्टिस वेरी वेल. एंड क्या कहते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम आएगा तो पूरा टीम है आप लोगों के लिए उसको सॉल्व कराने के लिए. एंड आप उसको अच्छे से करें. अगले साल के पेपर में मुझे लगता है कि आपका एफिशिएंसी और ज्यादा होगा. Yes, of course. And also what I feel from the different feedback of the students that you can get 15 out of 15 in aptitude. So I have also told this to many students that if you are securing 15 out of 15 in aptitude, then बाकी कितना रहता है सर? 85. उस 85 में से आप 50 लाओ. सर 50 का लाने का तो बहुत सिंपल तरीका है. हाँ, सॉइल मैकेनिक्स, एनवायरनमेंट 25 हो गया. 15 मार्क्स. मैथमेटिक्स
वही तो बस नहीं, ये 15 आपका इसके पास इन्वायरमेंट के पास चला गया, 15 मैथमेटिक्स के बाद 30 हो गया, और उसके बाद जियोटेक्निकल हो गया, और एप्टीट्यूड 15 हो गया। 60 मार्क्स तो यही पे आ गया सर, 60 मार्क्स देखो। ठीक है, बस आपको जो बचे हुए थोड़े से सब्जेक्ट है, जैसे कि अब हाईवे आता है, ट्रांसपोर्टेशन या ट्रांसपोर्टेशन से ट्रांसपोर्टेशन so the people actually were there any questions, would you please let me know in the chat section, although our DTP team is working on it, are there any questions in railway on airport this year? कराए थे, उसमें से भी आए थे सर, थैंक यू या हाशमी या। सो दैट्स द आवर आइडिया ऑन एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, इसीलिए हम कराते हैं उसको एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। सो एनीबॉडी इन द लाइव चैट सेक्शन, एनी क्वेश्चंस फ्रॉम रेलवे एंड एयरपोर्ट? बाय दैट टाइम क्विकली हिट द लाइक बटन। अभी सुबह के सर पेपर में एक एयरपोर्ट से अच्छा क्वेश्चन था काफी। ओके, हाँ, उन्होंने कराया भी था अंसारी सर ने। या सो दैट वाज इन द मॉर्निंग सेशन, आई एम आस्किंग अबाउट द इवनिंग सेशन, द फोरनून सेशन, आफ्टरनून सेशन एक्चुअली। आफ्टरनून सेशन द क्वेश्चंस आर बीइंग प्रिपेयर्ड। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चंस पता है तो आप लोग भी हमें बता सकते हैं। ओके, सो क्वेश्चंस, वी आर हैविंग द क्वेश्चंस राइट नाउ। एनी डाउट्स यू कैन आस्क, यू आर फ्री टू आस्क। या, सो Abhinav sir is coming with the first set of questions to all of you. Just quickly welcome Abhinav sir. Everybody hit the like button and share the session with everybody. Yes, we are ready with the questions, guys. So we are students are so helpful that they are sending us the question, and yes, I'm ready with the first question. ये बस कौन से मैच करना आप? Okay. Everybody कहाँ गया? यहाँ से ये करते हैं, फिर ऐसे करते हैं, फिर ऐसे जाते हैं 67 नंबर पे। Oh my God, this question I had done in the last 50 mark series. Great. Great, sir. Abhinav sir also might have done definitely this question in the class. So it's wonderful, amazing to see it. Same question exactly in the hydrology. Great. 67 पे जाना है, एग्जिट करते हैं 67। आ गया सर, आ गया सर, 67 आ गया सर। 67 नहीं सर, ये तो दूसरा था। I think it's your ये रहा, वो बन रहा है, अभी बन रहा है। No sir, the previous one I think. नहीं, ये Okay. So everybody, जस्ट इसका मैं फिगर भी खोल लेता हूँ एक बार। Everybody, we are ready with the first question, guys. Okay, आप एक आंसर चेक करना। इसका आंसर। Okay, see. Okay, everybody please come on, yeah, share the session, like, it's up to you. You want to like, dislike, that's up to you, my friends. Just after 20 to 25 minutes, I'm ready with the first question. First question is Som, guys. Okay, everybody just see what was the question. A proposed cantilever beam. Let me make the cantilever beam, guys, for you. This is the cantilever beam, and here it was a hinge. Okay, and what was given in this? In this, my champions, a UDL is acting. In this champion, a UDL is acting here. Okay, so UDL has intensity of 10 kilonewton per meter. 10 kilonewton per meter. Okay, जो एग्जाम देके आए होंगे उनको पता भी होगा, they will be relating to their exam, and this was given as, this one has given as 2 meter and this one has given as 2 meter. Okay, suppose, okay, what was the reaction at x? Let it be naming is something a, b, x. So reaction at x, vertical reaction, guys. So what was your answer? Just tell me in the comment box. What was your answer for this question, guys? Tell me in the comment box. See, everybody, since B is a hinge, so movement about B must be 0. Bending movement तो हमेशा 0 होता है यार. Bending movement about B is 0. So at A also there is this reaction. So let it be RA. So RA into, using the proper sign convention, into 2 meter minus this green one, guys. Green one's total load is 10 into 2. 10 into 2 is 20, and that 10 into 2, 20 is to be assumed at exactly at the center. That 10 into 2 is assumed to be exactly at the center. So it is 10 into 2, that is 20 load is acting at the center. From here, how much distance? From here, 1 meter. So 10 into 2 into 20 into 1 meter has to be 0. So my champions, my commanders, everybody, Arka, what was your RA? What was your RA? 20 RA was coming as 10 kilonewton. Okay, and summation of Fy is equal to be to 0. Summation of Fy is equal to be 0. So RA plus Rx, vertical reaction at x, is equal to downward load. Downward load is how much? 10 kilonewton per meter. How much total distance? 4 meter. 1 meter 10. So 4 meter is how much? 40.
So 4 meters is how much? 40. From here, RA we have already calculated 10. So what is the value of RX in kilonewtons? It is 30 kilonewton. किस का आंसर आया था? If you are from the afternoon session, just tell me guys, which are this session? Everybody, every commando. Okay, Somajita Datta is here. Somajita, I was actually busy in taking the question. That's why I'm not lifting your phone. I'll definitely call you in the night. Everybody, just tell me, guys. Have you got this answer or not? Everybody. Mera nahi. Please check. I was getting as answer as. Sir, one mistake was there in the question itself. I think these are 3 centimeters they have given, but the total rainfall is coming in 6 centimeters. That's why. Okay, नहीं 3 आ रहा है. ये 0.5 है नीचे. They're all intervals are 0.5. Okay, check करना. Then it's 3. Then it's 5. चेक करना. मेरा 4.2 आया था बच्चों को बताने से. Let us be confirmed first of all. Everybody, guys, come on यार, like and share the session यार. Just after 25 minutes, we are ready with the first question. I hope you are enjoying the session, guys. Everybody, please let me know. Are you enjoying or not? How was your exam? Can you tell me in the comment box, guys? How was your exam? Can you tell me in the comment box? Everybody, guys, just let me know. Okay, now moving to the next question, guys. Are you excited? Are you excited, guys, for the next question? Everybody? Okay. So guys, moving to the next question. Next question was 67. Okay, so let me make you the figure as well for this question. Number कहाँ गया? एक इसका 4.2 आ रहा है. So this was the question, guys. And let me make you the figure for this question. Okay, student has sent us the figure also. So the figure of this question, guys, everybody. Okay, so now Ankit Joshi is also ready with maths question. So Swamiji Datta, how was your exam? So मेरे पास 2-3 क्वेश्चन बचे. Okay, बिल्कुल खड़े हुए support मिलेगा मेरे को. Okay, Swamiji Datta, how was your exam? Are you satisfied, everybody, with your exam? Everybody, please let me know. So this was the question like this, and there was a shaft. और इसका डायमीटर दे रखा था क्या? हाँ, दे रखा था 0.1 मीटर. Okay, and one more shaft was given like this. And this diameter is also given 0.08 meter. Okay, this diameter was 0.08 meter. उसमें torque भी दे रखा है क्या? Here the torque was 1 kilonewton per meter. Okay, and in this green one, okay यार, ये कहाँ से खुल गया नोट कहाँ से खुल गया? ओके, सो मिट जाता है ये तो कोई बात नहीं. एवरीबडी जस्ट लेट मी नो. ओके, ये वाला क्वेश्चन तो कर दिया था ना हमने. ये वाला क्वेश्चन तो कर दिया था ना. वी आर गोइंग इनटू द कैंटिलीवर क्वेश्चन ना. वेयर वाज दैट? ओके, लेट मी रिफ्रेश इट. ओके, वो नहीं मिला तो कोई और कर लेंगे यार. नो नीड टू वरी. वो नहीं मिला तो कोई और कर देंगे. बिकॉज वी आर अप विद मेनी क्वेश्चंस. ओके, वो क्वेश्चन टाइपिंग टीम ने लग रहा है हटा दिया, बाद में करेंगे. ओके, नाउ दिस क्वेश्चन अगेन हाइड्रोलॉजी, गाइस. लेट इट बी प्रेजेंट. ओके, एवरीबडी 4.2. ओके, सो फ्रॉम हियर let me just take the pen. Okay, here. Okay, interval is not given na. So these all are 0.5. This will be 1, this will be 1.5, this will be 2.5, this will be 3, this will be 3.5. And we have to tell what is the Phi index. Okay, 30 was coming. 30. Okay, so everybody, you are getting that question as 30. Please let me know. Are you getting that question as 30? Please let me know, guys. Everybody in the comment section, are you getting the answer as 30? Now what was this, guys? Here you have to find out the value of Phi index. Okay, so my friends, of course you can assume various values. W index also you can calculate. So W index was total rainfall. Let me take a nice color. W index was 4 centimeter. 4 या 4.2? W sir. W 4 आ रहा था. Okay. W इसका भी डायरेक्ट लेना सर. अभी तो चलने लग गया. Rainfall is 30. Okay. So my champions. W sir ये आ रहा था. 5 सर आपका नहीं है.
Okay, so see, total precipitation was how much? Total precipitation was 12 into 0.5, 12 into 0.5 because it is for 0.5 hours, then 4.5 into 0.5 because that is for 0.5 hours, then it is 15 per 0.5 hours, and so on, 3 into 0.5 hours. So this total rainfall, okay, yes, it is given. The total rainfall from here you are getting as how much? I think you are getting from here 30 mm. Okay, 30 mm is 3 centimeter. 30 mm is 3 centimeter. Okay, and out of this, how much rain you are getting? How much rain you are getting? So that is runoff. I represent it with Q. Runoff is 1.6. So most easy is W index. W index is total कितना आया 3, कितना नीचे गया 1.6 by total time is 3.5. I think नहीं W index 4 नहीं आ रहा होगा. W index 4 आ रहा है सर. 3 minus 1.6 upon 3.5 hours है. नहीं सर mm per hour में 4 आएगा ना. नहीं. So just make it mm ना. It's 30 and it will be 16. 13 and 16. 14 by 3.5. 14 by 3.5 is not coming. It's check करो. 14 by 3.5 is 4. नहीं. Check करो. 14. Everybody, just can you please write on the comment box? It is not coming 4. Huh? 4 आ रहा है. 4 is coming. Yes sir. W index is coming 4. Okay. After that the 5. Okay. W index is coming here from as 4 mm per hour. Yeah. Okay. After that, when you will take the Phi index range, okay, let phi be greater than 4 and less than 4.5. Phi be greater than 4 and less than 4.5. Guys, you can take various ranges from there. It will not getting satisfaction. So okay, yeah. 4 and 3 0% minus. Yes, of course. That called 3 methods. Actually, I told my students 3 methods. Yeah. So one of these methods is you can take 5 first assumption less than 3, then check if assumption is matching or not. Then you take 3 to 4, then you can see it is matching or not. Then you can take 5 from value 4.5 से छोटा होगा and greater than 4. Let it be this range because I know I have already calculated, not wasting much of time. Yeah. So it will be something like this: 12 minus 5 rainfall in first period. 12 is coming, 5 is infiltration. So how much is remaining? 12 minus 5. Then second period, 4.5 is coming. Okay, and 5 is the going downwards. How much above? 4 minus 5. In third, it is 15 is coming, and 5 is going down like that. And then 14 is coming, and 5 is going down like that. Then it is coming. This is 4 is rainfall index. 5 is greater than 4. So here it will not be matching. Then it will be 7.5 minus 5 like this. In this there will be no runoff because उससे नीचे है ना 4 से ज़्यादा तो you are taking Phi index, so it is lesser. So net runoff you are getting from here is how much? 1.6. And when you are doing proper units and 1/2 values, because these are I have taken in per hour and actual value is 1.2 and 2 like that. From here the value of phi you are getting as 4.2 mm per hour. Yes sir. And that 4.2 is satisfying between 4 and 4.5. My friend, actually you have to do like 3 methods I have told you. One method was like this: from here these two values you can subtract these two values, and denominator also subtracting. That also is a method. So these are the various methods that from which you can solve the question. Okay, everybody, are you getting the same option in the exam? If you are from the afternoon session, are you getting the same answer? Can you please let me know in the comment section, guys? Everybody, can you please let me know in the comment section? And guys, one more thing for you. Everybody. Present. Okay, our video team is also helping us. Okay, so now it is the question of hydrograph. This also we have already done. Okay, so guys, everybody please see of the hydrograph question. Okay, 12-hour hydrograph, unit hydrograph, okay, of 1 centimeter rainfall excess of a catchment is triangular in shape. That is triangular in shape, that is T, and that is Q. Q is in meter cube per second, and time is in hours. And it has having a base period of guys, how much it is given with a base, and a base period of, it was 144 hours, huh? Base period is 144 hours. It is not written. Okay, so that was 144 hours, and a peak discharge was given as 23 meter cube per second. So my friends, as you all know that 99% questions in the exam has to be done by area of hydrograph is volume of water. Area of hydrograph is equal to volume of water. That is the question. So what is area of hydrograph? Half
into base 144, that is in hours. To make in seconds, it will be 3600 into meter cube per second is 23. Okay, so this is seconds by multiplying by 3600, and that is meter cube per second, so it will be meter cube. So area in kilometer square, this here is meter cube, so making here meter cube multiplied by 10 to the power 6. Area, volume of water is area into height, and that is 1 centimeter rainfall excess. 1 centimeter means 0.01 meter. Everything is in SI unit. Okay, so area here is 596.16 kilometer square. Area here is 596.16 kilometer square. So Joshi sir, are you ready with the question? Yes, sir. Okay, so now after me, let me just, typing team has done one more question or not, because I have done. Let me check if they have written for me or not. Okay, let me check, guys. Okay, so how was your paper? Can you write down till now? MSQ were very less, as we have already told you. Okay, how many from second set of civil? Okay, how was your paper, guys? Okay, and then this I have already done. एक shaft वाला question होगा. एक और. Okay. ये भी हो गया. ओके, तो एक काम करता हूँ, मैं खुद ही लिख देता हूँ यार, अपने स्टूडेंट्स के लिए मैं क्वेश्चन लिख सकता क्या? कांट आई राइट द क्वेश्चन फॉर माय स्टूडेंट्स? या कम ऑन, आई कैन डू दैट फॉर यू गाइज. ओके, सो वेयर वाज द क्वेश्चन? जस्ट लेट मी टेक माय ग्रेड अप कॉपी गाइज. मोहम्मद हकीम, वाज योर पेपर? मोहम्मद हकीम, यस, दिस इज द क्वेश्चन. व्हाट वाज द क्वेश्चन? लेट मी टेल यू. ओके, दैट it was the shaft. Okay, so it was something PO, and diameter was also given as how much? 0.1 meter. Okay, and here it is another shaft that is QP, and diameter here is 0.08 meter. Diameter here is 0.08 meter. Okay, now here the torque is acting something given in the question 1 kilonewton per meter, as our students have told. Okay, and here it is 2 kilonewton per meter. Length was given here is 1 meter, but that will of no use. So it is asked, what is the maximum shear stress? Tau max in megapascal. Tau max in megapascal was asked in the examination. Tau max in megapascal was asked in the question. What was your answer? First of all, before moving forward, can you tell me what was your question? What was your answer? Everybody, if you are from the afternoon shift, guys, what was the answer? What you obtained here? Please let me know, guys. What was the answer for tau max? See, if I am finding tau max in PQ region, it will be 16 into T into pi d cube. Okay, so Newton per mm square is megapascal. So 16 torque is 1 kilonewton means 10 ki power 3 into 10 ki power 3 for meter making millimeter upon pi d cube was pi into 0.08 ka cube. This value you are getting as 9.96 megapascal. Okay, this PQ region is 9.9 megapascal. Now if you are going in OP, so tau OP, एक वो OP शर्मा वाला जादूगर भी था ना? Okay, आपके आगरा में तो ज़्यादा चलता है ये सब चीज़. 16 into T by pi d cube. So 16, what is T here? If you cut the section here, so 2 plus 1, 3. 3 into 1000 to make in Newton, and it is again 1000. Pi d cube, what was D here? 0.1 ka cube. So this value from here is 15.28. 15.28 में से 9 में से बड़ा कौन है? Which is bigger? This is 15.28. So answer is 15.28 megapascal. अब वो राउंड 1 डेसिमल था या 2 डेसिमल था, वो आप ज़्यादा जानते होंगे. Okay, so everybody is here, guys. Come on, just quickly share the session, yaar. So much effort our whole team is doing. Can you just please write down, do a share for us here, guys? And one more question was from latitude and departure also. That student has told us latitude and departure was one more question. Okay, so what was given there? Summation of latitude was given something. Summation of latitude was given, summation of departure was given. So what was error? Under root summation L square plus summation D square, something 3.5 or something like that he was giving. And tan theta also you can calculate, that will be the summation departure upon summation L. Okay, depending upon theta you are taking from x axis or y axis. So 3.5 उसका ऐसा कुछ आंसर आ रहा था, was question from survey. Ansari sir, the expert of that will delete it. Everybody, how was the champions, my friends? Come on, just tell me, how's the Josh? Come on, everybody. Just share the session now. Joshi sir is coming, my friends. We are first to give you the solution, my friends, and every way we are helping you. Just Krishna sir has taken the marathon just 3 days before the exam of newly added topic vibration, and from that newly added topic question has come here. Everybody, my friends, have you enjoyed this? Everybody,
So now Joshi sir is coming, guys. Just give a like for him, yaar. Everybody, Joshi sir is here. So कौन सब्जेक्ट के लेने वाले हैं आप? सर मैं हाईवे और ओसीएफ फोड़ दो सर, फोड़ दो बच्चे फोड़ के आए सर हमारे। उन्हें कमेंट से जितनी उत्सुकता दिख रही है, एक्सीलेंट यार, ट्रेमेंडस, थैंक यू। सही है सही। So everybody, how you come on. सबसे पहले guys, what is this? Where is the people guys? Where are people? And guys, just full power के साथ share this video with your friends and on your Facebook and also on your WhatsApp group, because we are going to tell you. See, Abhinav sir, I've told you so many questions, right? And now I'm here with highway, right? And then OCF, and then one more time I'm telling you, Aptitude is also coming, maths is also coming. So don't worry, just full power, full power. How was the question, guys? How was the question paper? फोड़ा कि नहीं फोड़ा, आग लगाई कि नहीं लगाई, जल्दी से बता दो full power के साथ. Yes, Atul Ninja is here, so फटाफट से आ जाओ दोस्त, and I'll tell you each and everything here. Okay. चलिए. So सबसे पहले guys, first of all, कैसा रहा भाई? सवाल कैसे थे? Did you enjoyed the paper? As per you, how was the exam? Wasn't easy or tough? बता दो एक बार जरा, full power से speed और energy चाहिए भाई, full energy भी चाहिए, energy के साथ आएगा तो ही मजा आएगा, right? Full energy. Come on everybody. All right, 45 attempt, चलो सही है everybody, come on the another channel भाई, दो चैनल पे लाइव है हम लोग, दो चैनल पे लाइव है, हिंदी Civil Champion and also on Gradeup Gate YouTube channel. Yes, everybody, full power. Yes, Vinod is here, and I hope those who have followed us from the day one, I hope you all have got something. Oh my God, this question. How many times we have discussed this? Tell me, how many times we have discussed this question? And I have told you, I think, advanced version of this as well. Remember? I have told you velocity, density, traffic flow. I was yelling like anything and you people were listening it, right? And I hope when this question you have seen, you are not going to have any kind of doubt in front of you and the answer was automatically in front of you, right or not? Reaction time wala question. All right, we'll see about that also. So first of all, बोल दीजिए सर, टफ नहीं था सर, बिल्कुल सौम्यजीत ने बोल दिया है बहुत टफ नहीं था. यस, एग्जैक्टली. सो नाउ अंडरस्टैंड दोस्त, अंडरस्टैंड, वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस ऑल्सो इन दी सेशन एंड राइट अवे ऑल्सो. अंडरस्टैंड क्या बोल रहा है, एक बार देख ले क्या, राइट, फुल पावर के साथ. सो रिलेशनशिप बिटवीन ट्रैफिक स्पीड एंड डेंसिटी इज डिस्क्राइब यूजिंग अ नेगेटिवली स्लोप्ड. अरे बाबा, आई हैव टोल्ड यू गाइज इन दी सेशन ऑल्सो सो मेनी टाइम्स दैट, चलो लेट्स सपोज दैट डेंसिटी आई एम टेकिंग हियर and velocity here, right? So what I have told you, when the velocity will be zero, we are going to have the jam condition. So velocity zero means jam condition. I'm having K is equals to the maximum density. Set hai, full power. And what, 200 watching nahi bhai, kya? Why? Just share the session, guys. Our whole team is here. And you don't have even idea that how many people are there in the back end, right? So just full power say hit the like button for those people. Also just share the video, right? And then you also know that whenever the density will be zero, at that time what is going to happen, what is going to happen. Or I have given you the example. Which example I have given you? Which expressway I have given you the example of? Yamuna Expressway. I have given you the example as well. So when the velocity is this much, okay, now this relationship is linear. Remember? Right? We have talked about it. Negatively sloped, right? Okay. So now what they are saying is, if VF is free flow speed, then the speed at which maximum flow occur. Maximum flow. बोला था ना ये? पहले बोलो जरा. First of all, just send me the heart sign if you remember that we have discussed this question. If we have discussed this question and you remember it, just send me a heart sign. Even the advanced version of this I have told you in the exam, in the class also, right? Okay, moving on to the next question. All right, again cherry cake, एकदम cherry on the cake वाला आ गया तो, है ना? बिल्कुल सही, exactly, D was the right answer. Amazing. Yes. Understand? In an aggregate mix, percentage weight of coarse aggregate is given. Okay, coarse aggregate is given to us, and what else is given to us? Coarse aggregate, fine aggregate, mineral fillers. Okay, we have the percentage by weight, right? We have the percentage by weight. Other than that, we are also going to have the specific gravity of all of them. Arey yaar, just you have to get the value of specific gravity. Can't we do this? Come on, tell me. Yes, I have given you the ninja technique as well. Not at all that much. Yes, bilkul.
सर आखिरी जाके सही किया, थोड़ा राउट हो रहा था। ठीक है, सही है, बहुत सही। कितना आंसर है आपका इसका? बोलना जरा, हाउ मच आंसर यू आर गेटिंग? बोल दो यार। इफ यू आर गेटिंग 2.6, जस्ट सेंड मी a quick heart sir in the comment box with full power, with full power यार, with full power। हाँ जी, तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, वी आर हैविंग द वैल्यू। सो ओके, लेट्स ट्राई टू गेट द वैल्यू। एक सेकेंड, पेन सिलेक्टेड, सेट है। ओके सर, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दिस ऑल्सो। हमने इधर 100 ले लेना है, एंड नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, 55 अपॉन हाउ मच इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी करस्पॉन्डिंग टू दिस, दैट्स 2.55। इजंट इट? उल्टा तो नहीं लिख दिया? मैं देख लूं कहीं उल्टा लिख दिया हो, दिक्कत हो जाएगा। नहीं, फॉर कोर्स एग्रीगेट फाइन एंड मिल रहा, सही है, एवरीथिंग इज सेट एकदम। एंड 40 बाई 2.65 प्लस हाउ मच इज दैट, 5 by 2.7। आंसर इन द कमेंट बॉक्स विथ फुल पावर गाइस। हाउ मच? 2.58 was the exact answer. if I say 2.58 I think, right? Just let me see, I have done it. Yes, 2.58 is the exact answer, right? So how many of you got this? Come on, tell me यार, full power। क्या बोला था? 1 डेसिमल बोला है क्या? 1 डेसिमल बोला है क्या? अरे हो गया यार, 2.6 लिख दिया, done। If they were asking you about, like they were saying 1 decimal, if they were saying just 1 decimal, that's it, we have got the answer, 2.6, right? Set है भाई, मजा आ गया। Thank God that we watched that video, right? 2 decimal बोला था। अब देखो बाबा, अगर 1 decimal था, if they have said 1 decimal, then 2.6 is the correct answer. If they have said 2 decimal, then 2.58 is correct, right? इसमें देखो, because we have got 2 decimal, right? We have got 2 decimal, that is why I'm saying this, okay? Right? Set है। आगे बढ़े, अगला कुछ दिखाऊं मैं आपको, खुश हो जाओगे यार, एकदम कहोगे अरे सर दिस इज इजी, राइट? एक्चुअली में इजी है, दिस विल टेकन बाय अदर फैकल्टी। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू शो यू गाइज। अरे यार, इतना इजी क्वेश्चन नहीं देना था। यू व्हाट यू डिड विद दिस क्वेश्चन गाइज? क्विकली टेल मी यार, व्हाट इज दिस? टेल मी सर। ही आस्क्ड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एग्री, ऐसा है क्या? I'll see that, don't worry. The concept will remain same. If that's the case, then also remember the concept will remain same. You will be having the specific gravity, and then you just have to get the value of the whatever you are asking. The formula will remain same. The value may change left or right. Okay? What happened, Rahul Patel? Why? What happened? So guys, now this is the another question. Right? Okay, it will be amazing, Harsh, if you can tell me the exact what they were given in the question, right? I'll do it here only, straight away. Alright, so the answer to this question, everybody in the comment box with full power यार, हो जाएगा क्या आंसर इसका? A very easy question, and they are asking for the critical depth of rectangular channel section. Everybody have given the correct answer यार, very good, amazing. Question was easy actually, this question is very super easy. So it should be how much? Determine the critical depth, or critical depth is nothing but Q square by G raised to the power 1 by 3. Now here Q is nothing, that is the discharge per unit width. That's it. We have the discharge, we have the width, that is it. So the discharge is how much? 20, and the unit width is 6 meter. Now it is discharge per unit width, that is small q, by 9.81 meter per second square for those who are from Earth. And those from Mars, you have to refer your code. Sorry for that. 1 by 3, and it should be 1.04 meter तो लिख दूं ताकि आंसर आ जाए। Everybody just full power से, where is the energy? Hit the like button and share this video with each and every friend who is going to require this video. Right? आया क्या? 104 आया, 1.04 heart sign. Where are the heart sign? Quickly, full power के साथ। Yes, now फाड़ के फेंक दिया, होना ही था यार। दिस क्वेश्चन वाज दैट टाइप ओनली, राइट? आफ्टर मी नाउ द अंसारी सर इज गोइंग टू कम एंड ही इज गोइंग टू डिस्कस हिज क्वेश्चंस। सो एक बार बहुत जोरदार तरीके से वेलकम कर दीजिए यार। अंसारी सर इज हियर विद अस, एवरीबॉडी। नाउ सर इज गोइंग टू टॉक अबाउट हिज क्वेश्चंस। सर, hello everyone.
Hello everyone. I know you all are waiting for that, isn't it? I know you all are waiting for that. I'll just come to directly to the question. I hope all of you have done well. And now, slide number 57. Just a second. Slide number 57. Come on guys, till then जरा फटाफट से बता दो यार, how was the question paper? सही था ना? I think that was this paper. I'll say moderate, right? And MSQ. क्या हुआ? हाँ भाई, we were having a lot of sessions on MSQ. Everyone was having fear of this. The MSQ will come, sir. What we are going to do? I don't even remember. There were so many questions about MSQ that sir, what if 3 are correct and I only chose 1? So will I get some marks? Half marks will I get or something like that? All right. So MSQ आया ही नहीं. सिर्फ बच्चे सोचते रह जाते हैं, ऐसा है ना सर? Yes. चलिए sir. All of you please see. This was the question. The most probable value of the angle Q. So from the memory based only, I got the data that the most probable value, and you know how to calculate most probable value. Come on, tell me. You know how to calculate the most probable value, right? See, weightage is given here. Weightage for all of the angles given here. So what you will do? So most probable value is one of the simplest thing which you have to calculate. Most probable value. So 36 degree, 30 minutes, multiply with 4, then plus 36 degree, 3, that is the weightage, plus 35 degree, 30 minutes into the weightage, plus 36 degree, 30 minutes into the weightage, divided by the total is 437 plus 8, 15 plus 4, that is 19. And you will get the value that is 36 degree. That was one of the simple thing, I think, whatever they asked, and it was very obvious. In fact, when I was doing that revision, those who came for my revision class, you remember that I asked that from theory of error. Lot of students asked me, sir, these theory of error I have not completed. Then I asked all of them, whatever in questions I am conducting in the revision classes, do only that questions. And do you remember, if anyone is from my revision class, can you say that same, see Somajit, maybe you have seen that question that I told you regarding most probable value, isn't it? In revision class only I told you that most probable value is going to come. Now next question, come to the next question here. Which is the next question is also very interesting. So latitude and departure is given, and he is asking what will be the, so I don't have that options, all the 4 options, but I got the complete question here, that for a traverse, latitude and departure has given for a closing error, right? Latitude and departure for the closing error has been given, so are calculated, and it is found that sum of the latitude plus 21 and sum of the departure was minus 2.8 meter, isn't it? So if the sum of the latitude plus 2.1, that is error given, sum of the departure you got it minus 2.8, it means you have plus 2.1 latitude given, then 2.1, right? And minus 2.8 departure given, you know, any line has a projection on y-axis is latitude and projection on x-axis is your departure. He's asking simply what is the length. So length means what? So here length of your closing error will be 2.1 square plus, then no need to write minus also because you are doing the square, no need. So it will become 3.5, and if you calculate the angle, from here, this is your maybe the line. If you any angle, if you are calculating, suppose this theta, if you are calculating, simply tan theta, can you see that? Tan theta equals to 2.1 divided by 2.8, and theta will be around 53 degree 13 minute, 53 degree 13 minute, right?
around 53 degree 13 minutes. So no, this theta you will get not okay, just a second. This theta you will get around 36 degree. This theta you will be getting it around, where I have written that, the calculated value I have written somewhere. It will be around, yes. So you will get the angle for this one. So theta value you will get, then from theta if you will calculate, finally I have calculated this angle, which is around 53 degree 13 minute, right? 13 minute. So from north side, from north, this is towards now coming in a west side, that is 53 degree 13 minutes, and 3.5 meter is the closing error. Coming back to once again one more question from the railway. I will not take much time for the railway question. We'll go to the last slide. 153, I think 153 or some slide number they have given. लास्ट में कहीं पे ऐसा वाला होगा. एक स्लाइड अभी अपडेट हुई है 157 बच्चों को बता सर रिफ्रेश इट नहीं रिफ्रेश इट चेंज अकाउंट बैक कर लो बैक करो एक रिफ्रेश कर लेते हैं सर. पहले एक स्लाइड ऐड हुई है अभी रिफ्रेश हो गई अपना ओके ये वाली स्लाइड बतानी है जरा अभी बताइए. अच्छा सर ओके अरे अच्छा कैसे लग गया. So now there is a new, see, there is a questions for afternoon session. You can see from the transportation 1 marks, 2 questions were there. For the 2 marks, 3 questions. From fluid mechanics 1. So one thing you can see here, definitely see, when generally you are actually, sir, Abhinav sir, स्टूडेंट हमेशा यही सोचते सर ये इस बार तो लगता है जैसे जियोटेक आना तो वही आ जाएगा. एवरी टाइम द ट्रेंड दे आर फॉलोइंग ऑलमोस्ट सेम, इजंट इट? आप देखिए ना, वेरी स्मॉल वेरिएशन, सर्वे का वेटेज है सर, वेरी स्मॉल वेरिएशन, इजंट इट? सो same thing you can see, observe, the observation is almost same, isn't it? Geotech once again, see 14 marks is there as expected. Yes, I can say Geotech 14 marks. Maybe you were expecting 12. Okay. Maybe 2 marks more. See a sudden decrement in SOM. Yeah, and I'm seeing from last so many 2-3 years that SOM is decreased. And you see, who can expect that survey will be having 8 marks? Surveying 8 marks. And SOM of 4 marks. That is quite unexpected, guys. And environment weightage is suddenly not from past 2-3 years it is increased, and this year also environment too much. And this is one more. RCC you can see only 1 marks यार, क्या बताओ स्टील 3 marks. But sir one thing I can say, एक चीज तो पूरा बढ़िया चल रहा है, स्ट्रक्चर सुबह भी और शाम भी. स्ट्रक्चर मैंने कहा भी था कि IIT बॉम्बे इज मेकिंग पेपर, तो स्ट्रक्चर विल माइट बी मोर देन यूजुअल. Okay, and engineering maths 11 marks, although they have written 13 there. Aptitude 15, वो तो constant है. Okay, building construction material 4, structural analysis 6, and if you want to know the whole pie chart, that is something around this, guys. Okay, so this is the complete analysis. Okay, and you will get PDF of detailed solution. All questions PDF of morning shift, evening shift in the comment section description. Yes. Coming back to the 157 or something like that. 157, last slide almost. Right. Not this one. Yeah, 2 degree curve. Now guys, one question came from that railway. 2 degree curve, maximum speed sanction, equilibrium speed they have given. See, maximum speed if they have sanctioned and equilibrium speed if they have given, and he is asking what is the Kant deficiency. So it means Kant deficiency, whatever he is asking, this is based on, he is not at all asking your Kant deficiency maximum. Here, what is the Kant deficiency? Can you calculate it? Very simple, no? You calculate E equals to what? GV square by 127R. That's all. Finished. G is what? 1.75. That is also they have given, if you'll see that. Then V is what? Calculate it for 100. Calculate it for 100 kmph. 127 into R value. How you will calculate? You know already. How to calculate R? R equals to 1750 divided by 2, that is 2 is the degree, 1750 divided by D, and 1750 by 2 if you will calculate, that is 875 meter is your radius. Put it here, 875, isn't it? Now after 875, comment. Any comment you देख नहीं समझ में आ सर क्या लिखा हुआ है. लड़का लिख रहा था न्यू सिलेबस के हिसाब से कितना. अभी हम लोग आ रहे हैं. न्यू सिलेबस के हिसाब से कितना है? वेट ओके दैट आल्सो विल आंसर न्यू सिलेबस के हिसाब से कितना आया है ना. ओके, दिस इज 1.75 100 स्क्वायर. हाउ मच विल बी गेटिंग इट हियर? रुक यार, ये कैलकुलेट सर कहाँ गया?
you will be getting around 0.157, right? 0.157. Then if you'll calculate for, this is the total super elevation required for 100 kmph speed. Now calculate for required super elevation, that is E2, for equilibrium speed, that is 1.75 into same equation, gv square by 127r, isn't it? V already, it is given, it is square by 127r, 127, and r is 875, you know, r is 875. Just now we have calculated. If you calculate, how much you'll be getting, that is 0.10078. So bhai, this E is what for maximum speed, this E is what for equilibrium. What is the can deficiency? What should I say? Subtract this E1, E1 minus E2, and how much you are getting? If you subtract, you are almost going to get 56 mm. You are going to get 56 mm, and that is your can deficiency. That's all for this one. Okay, so over to Krishna sir, and he will tell you what is the change as per the syllabus change. What are the questions came? So come on guys, like and share so that all of them will understand and listen this. भाई पहली बात तो ये है कि मैंने आप लोगों को I have already taught the vibration portion on the YouTube itself guys, and that was the free session. So I think all of you have watched that particular video. हो सकता है काफी बच्चों ने भाई वो वीडियो देखा हो, तो अगर जिन बच्चों ने सिर्फ वीडियो ही देखा है भाई, तो हिट द लाइक बटन, और साथ ही साथ जल्दी से हार्ट का साइन या आग का साइन बना दीजिए बच्चों, ताकि पता लग जाए कितने बच्चों ने वो वीडियो देखा था। क्योंकि अभी मैं 2 क्वेश्चन लेके आने वाला हूं बच्चों, एंड दोस 2 क्वेश्चंस इज टोटली बेस्ड ऑन द सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम, है ना जी। जल्दी से बताइए कितने बच्चों को ये क्वेश्चन के बारे में, यानी ये जो सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम वाइब्रेशन वाला वीडियो था वो देखा है जी, जल्दी से। I think I have changed my अभी नहीं किया सर। अच्छा ठीक, चलो। So let me discuss the question guys, and definitely I think that was the very simple question which I have already asked in your examination। भाई बहुत ही simple question था। Let me tell you guys, I think ये भाई छोटा है यार, है ना, I have to take that one। Yes sir, yes sir। चलिए जी, let me show you the question guys, and definitely all of you are able to solve that problem। Okay, I think this one is yes। Now you can see here guys, this is the question। कहाँ चले गए यार ये? Can you set that question? Sure. Can you set that question? 57। I think it is not working properly। 57 number slide। Yes, बार जा रहा है। 57 number slide। Why it is minimizing again and again? इसके 61, 57। Oh. 58 है। Okay, एक बैक कर लेते हैं। Where is that question? Wait a minute guys, refresh it। Check the 157 number slide, 157, the last one। So guys, I have already taught you the concept of behind that question। Yes, 2 वाइब्रेशन आया था सर, 2 क्वेश्चन आया था। yes that one, 158 and 157। okay guys, so these are the 2 questions which asked in your examination, and definitely guys, this one is a very
good question and very easy question in front of you. So let me show you how to solve this one, and it's a very, very simple one. What is asked over here? The single degree of freedom model, whose mass m, natural frequency, they have asked the natural frequency for the system for horizontal oscillation, right? So guys, this is the diagram which is given to us, right? This is the diagram which is given to us. So guys, what is given in this question? This particular figure is given to us, and what we have to find over here, we have to find the stiffness over here, right? That will be based on natural frequency के basis पे बोला था. Now it is a very simple question. Let me tell you how to solve this one. Let us suppose guys, this particular end is fixed over here, and let us suppose this one is also fixed. Why it is fixed? Because this particular beam, this particular mass or beam, we can say that guys, it is a rigid one. So definitely this one is fixed, this one is fixed, right? Now you know that guys, if I put a force over here like P, right? So we have a moment. Arey yaar, why it is selecting eraser over here? Okay, so guys, this one is fixed, so definitely we have a moment over here. Similarly, we have moment over here. Now what is this value? Can I say that guys, this one is 6 EI delta upon L square? Yes sir. So this one is also 6 EI delta upon L square. Now guys, if you take the summation moment at this particular point is equal to 0, then definitely we are able to find this particular value of P, which is equal to 12 EI delta upon L cube, right? Definitely sir. So guys, in this particular question, what is given to us? We have 3 massless column over here, right? Whose stiffness is given to us like this is EI and L. This one is EI and L. This one is EI and L, right? These are the data which is given to us for these type of column. Now guys, for a single column, we have a stiffness of what? That is equal to 12 EI upon L cube. Can I say that guys, this delta is equal to PL cube by 12 EI, and this is the value which is already given in the question. But I have taught you how to get this particular value, है ना जी? कैसे ये value find होती है ये हमने देख लिया, ये बात समझ में आती है? Now listen carefully guys. If you want to find the stiffness of this particular single column, can I say that it is equal to how much? It is equal to 12 EI upon L cube. If you put delta is equal to how much? 1. This is the stiffness for single column. Now we have a 3 column over here. So can I say that guys, what is our K equivalent value? That is K1 plus K2 plus K3, right? So can I write it guys? 12 EI upon L cube multiplied by 3. So it is equal to 36 EI upon L cube, and this is nothing as guys, this is our K equivalent value, right? This is our K equivalent value. Now what is the question over here? We have to find the natural frequency. Can I write guys, it is equal to W is equal to under root of K by M, and what is the value of K? We have 36 EI upon L cube. So can I write it guys, under root of 36 EI upon L cube divided by M. So guys, can I write here 6 under root EI upon ML cube? Now you can see here guys, which one is the correct answer? अरे बोलो जी, कौन सा सही आंसर है? Tell me guys, which one is the correct answer? And it is a very, very simple question, I think so, right? It is A. A, G. A is the very, very closest one, or we can say that this one is the exact answer, right? Let's move to the next question. अगले question पे आते हैं जी. Next question guys. Let's move to the next question. Now again we have a single degree of freedom question guys, in which we have to find what? In which we have to find the natural frequency, which is based on Hertz, right? It is based on what? Hertz. We have to find the natural frequency on the basis of Hertz. So again we have to find the K equivalent value over here. Now you can see here guys, both and are fixed. This is the mass and both and are what? Fixed. So can I say that guys, the stiffness of this particular member is equal to how much? It is 4 EI by L square, or 4 EI by L. ये होती है जी.
this is nothing as 4 EI by L. This one is also 4 EI by L. But guys, can I write K equivalent value is equal to K1 plus K2, right? Which is equal to 8 EI by L. Right, sir? Definitely. But listen carefully. They have already mentioned this particular value. ये उन्होंने पहले से मेंशन कर रखा है the flexure stiffness of beam that is 4 pi square. It means for a single beam they have the stiffness of 4 pi square, guys. 4 pi square. So can I say that, guys? Can I say that if we have two portion of beam, this is the memory based question, guys, definitely, and the student who gave this question, they have told me that this particular single member have a stiffness of 4 pi square. Similarly, this one member have a 4 pi square as a stiffness. Okay, so guys, if we have 4 pi square as a stiffness, so can I write it? K is equal to K1 plus K2. So can I write it, guys? It is 4 pi square plus 4 pi square. It is equal to 8 pi square, right? This is the stiffness, which is a very equivalent value. Again, we have to find the natural frequency, but it is in Hertz. किस में होना चाहिए जी? Hertz में होना चाहिए. Now you know that, guys, natural frequency can be written as, in terms of Hertz, 1 by 2 pi under root of K equivalent by M. Right? So can I write it, guys? 1 by 2 pi under root of K equivalent. What is the value of K equivalent over here? It is 8 pi square. Divided by how much? That is your mass. Mass is equal to how much, guys? It is 10 kg, which is given to us. मैं आपको बता दूं बच्चों, ये 10 kg given था. ठीक है जी? 10 kg given था. Right? Now, guys, this particular value is given in kilonewton per meter. So if it is in kilonewton per meter, you have to convert it. So let's multiply with 10 raised to power 3 so that it is converted into Newton per meter. Right? Just solve it. You will get the answer, and we are getting a value of 14.14 Hertz. Right? So this is the natural frequency, guys, in terms of Hertz, and these are the two questions which is already asked in your examination. And definitely बच्चों, आप लोगों ने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए होंगे जी, और बहुत ही आसान प्रॉब्लम थे. एंड डेफिनेटली दीज आर द वेरी वेरी सिंपल प्रॉब्लम विच इज गिवन बाय द एग्जामिनर. एंड कुछ बच्चे पूछ रहे थे, आई थिंक राहुल पूछ रहा था कि सर कितने क्वेश्चन या न्यूली एडिट टॉपिक से कौन से क्वेश्चन आए थे जी? ये 2 क्वेश्चन थे, देख लो. और मैंने आपको YouTube पे पढ़ाया भी था, बोला भी था बच्चों कि ऐसे टॉपिक्स को पढ़ लीजिएगा, सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम के बहुत आसान क्वेश्चन आएंगे. बट डेफिनेटली गाइस, जिन बच्चों ने पढ़ा होगा ना, those who student already covered this particular topic in the last time, एक हफ्ते की ड्यूरेशन में कवर कर लिया होगा, नो डाउट उड़ा गए होंगे. और ये 2 क्वेश्चन आपके लाइफ में मार्क्स ऐड करके आपकी रैंक को चेंज कर जाएंगे जी. ठीक है, ये बात का बहुत इंपॉर्टेंट से ध्यान रखिएगा. ठीक है, अभी थोड़ी देर में बच्चों हमारे साथ और भी लोग आ रहे हैं और आपके साथ यहाँ पे और क्वेश्चन शेयर करेंगे. और अब आपके सामने जोशित जी हैं. चलिए. So guys, hello everybody. चलो फटाफट से बता दो यार, अभी तक सही चल रहा है, सेट है सब कुछ, मजा आ रहा है? Are you getting the questions? कितना लग रहा है, कितना स्कोर करोगे, जरा फटाफट से बताओ, फटाफट से. Everybody. So अभी तक how many subjects we have discussed, everyone? All right, so Shubham sir is here now. Everybody, come on, just send the heart sign for Shubham sir because he is here for your. मैं क्वेश्चन कराने नहीं आया भाई लोग, मैं तुमसे ही आंसर पूछने आया हूँ, क्योंकि क्वेश्चन इतना जबरदस्त है कि आंसर तुम बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा. चलो भाई, चलो ये भी ठीक है, चलिए आ जाइए फटाफट से गाइस, फुल पावर के साथ. लेट्स डू इट. Okay, and one question also I will add from fluid mechanics, which we have got. Someone told us in the comment also, right? The question was related to your correction factor, right? Can you just quickly let me know क्या था वो, एक बारी फिर से बोलोगे क्या everyone? 2 मिनट का क्वेश्चन है यार, 2 मिनट का क्वेश्चन नहीं था वो, 1 सेकंड में मैं अभी बताता हूँ आपको, रुक जाओ. I have the question. All right. So the question was the question was the ratio of momentum correction factor to kinetic energy correction factor in laminar flow. हो गया यार, done, right? So guys, first of all, what is the ratio? What is the momentum correction factor for laminar flow? Fully developed laminar flow के लिए what will be the correction factor? Everybody tell me in the comment box. Momentum वाला भाई, momentum correction factor 4 by
4 बाय नीचे क्या आएगा 1 2 3 1 2 3 4 बाय एवरीबडी इन द कमेंट बॉक्स लेट अस नो. So the momentum correction factor for the fully developed laminar flow will be 4 by 3, correct? And the kinetic energy correction factor will be how much? How much? Come on, tell me. 2. Amazing. So now 4 by 3 by 2 is nothing but 2 by 3. यार आ गया आंसर आपका, right? This was the B option. So 2 by 3 is the correct answer. सर अब बड़े अरे सॉरी सर थोड़ा मैं सर भावनाओं में इधर उधर चला जाता हूँ. डर लग रहा है इस क्वेश्चन से बहुत. बच्चा कट ऑफ पूछ रहा है, कट ऑफ बता दो. कट ऑफ सुबह के लिए तो एक्सपेक्टेड हमारी यही थी कि 30-35 सुबह के लिए. सुबह के लिए तो हमने बताया 30 to 34 कट ऑफ रहेगा. और पेपर मॉडरेट है, लेकिन 2020 वाला पेपर हद से ज़्यादा आसान था और 2020 पेपर वाज वेरी वेरी इजी. तो कंपेयर टू 2020 द कट ऑफ मे डिक्रीज बाय 1, 2 or 3 marks. Okay, that is not because this year paper is difficult. You all know that 2020 paper is हद से ज़्यादा easy. That was very very easy. Okay, so for cut off से देखो, cut off से तो मेरे को पता है most of you are not thinking of cut off. Cut off will be 30 to 34 plus minus 1 or 2. Right. And for PSUs and MTech, for MTech the cut off might decrease by 1 or 2 or 3 marks. But PSU यार it is very it is very early to say. अभी तो शुरुआती रुझान है. Why? Because मैं तो पेपर के हिसाब से बता दूँ कट ऑफ, बट the PSU the major cut off depends not only marks but on the number of seats. Exactly. क्यों अंकित जोशी सर? PSU का कट ऑफ सीट्स पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, ना कि मॉडरेट या इजी लेवल पर. ओके ओके सर, मैं इनको 2 क्वेश्चन से आंसर पूछ लेता हूँ बस. तो सर का क्वेश्चन का तो जवाब दे देना. ये तो आपको देना ही है भैया. PSU का कट ऑफ जो है वो डिपेंड करेगा कि आपका पेपर अच्छा हुआ होगा तो कट ऑफ थोड़ा सा ऊपर ही रहने वाला है, और नंबर ऑफ सीट्स पर भी. और सर पेपर अगर खराब हुआ होगा ना तो कट ऑफ है ना नीचे आएगा. करेक्ट. ठीक है, तो आप इसकी चिंता मत करो, वो रिजल्ट अपने आप आएगा. और थोड़ी देर में शुभम सर के बाद मैं और राकेश सर मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं. जाइएगा नहीं, पहले शुभम सर को देखिए फिर हम. मैं तो कुछ कहने नहीं वाला हूँ सर, मैं आंसर लेने आया हूँ, मैं देने ही नहीं आया आंसर. अच्छा बहुत सिंपल है सर क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है सर, आप भी पूछ सकते हैं. सीजनिंग ऑफ टिम्बर इज डन फॉर. सर हम तो इसमें अनपढ़ हैं. हाँ मतलब सिविल कहाँ है सर, ये होशियार है ना. हाँ ये सब बता देंगे. क्यों भैया, क्यों करते हैं सीजनिंग ऑफ टिम्बर? मेरे हिसाब से तो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है. रिमूवल ऑफ सैप एंड वाटर. तो भाई सैप वुड हटाने के लिए और पानी हटाने के लिए हम सीजनिंग करते हैं. सिंपल आंसर. ठीक है, खत्म. दूसरा क्वेश्चन भाई, ये रहा. सिंपल क्वेश्चन है, आप ही आंसर कर दो, मैं क्या आंसर करूंगा. The softening point of bitumen has the same unit as that of viscosity, temperature, time, distance. हाँ जी बता दीजिए. ठीक है, हाँ विवेक शर्मा जी, बिल्कुल स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी बढ़ती है अगर आप सीजनिंग ऑफ टिम्बर करते हैं. सैप और वाटर अगर आप हटा देते हैं तो. ठीक है ना, आपको ये सिंपल बताना है कि सॉफ्टनिंग पॉइंट ऑफ बिटुमेन हैज द सेम यूनिट ऑफ एज दैट ऑफ. ठीक है ना, किसके जैसी होती है भाई? विस्कोसिटी, टेम्परेचर, टाइम, डिस्टेंस. सॉफ्टनिंग पॉइंट. हाँ बताइए. अतुल पांडे जी कह रहे हैं डी, डिस्टेंस. जैसे सर आपने ये बात की क्या? नहीं सर, क्या बात कर रहे हैं? अरे भाई रिंग एंड बॉल टेस्ट क्या कर रहे हो सर? ठीक है ना, क्यों बेइज्जती करवा रहे हैं आप लोग? रिंग एंड बॉल टेस्ट करते हैं. अपरेटस दिखाया सर. आ रहा है सर, देखिए सर. आरती ने सही जवाब दिया, बिल्कुल शानदार. आभा विक्रम बचा ली भाई, इज्जत बचा ली सर. बहुत बड़े शानदार. टेम्परेचर. ठीक है ना, तो सिंपल क्वेश्चन था, आसानी से आप बता सकते हैं. ठीक है ना. इफ यू गॉट 60 प्लस देयर इन चांस ऑफ एमटेक एमटीसी. बिल्कुल बिल्कुल यार, 60 मार्क्स पे तो मिल ही जाएगा यार. कैसी बातें कर रहे हो यार. ठीक है ना, और आप अच्छी जगह जाएंगे 60 मार्क्स लेके. ठीक है, और थोड़ा सा कोशिश करिए कि इसको और इंक्रीज करिए तो और अच्छी जगह जाएंगे. ठीक, तो 2 क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन आए बिल्डिंग मटेरियल से, एक बिटुमेन के ऊपर और एक टिम्बर के ऊपर. सुबह के सेशन में सीमेंट के ऊपर क्वेश्चन था. ठीक है, तो बहुत ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं है. अब थोड़ा सा हम मूव करते हैं मैथमेटिक्स की तरफ. ठीक है, मैथमेटिक्स पे चलते हैं. एंड आपको अंकित जोशी सर और क्या कहते हैं तलरेजा सर आपको मैथमेटिक्स में बिल्कुल बढ़िया करा देंगे. स्लाइड लगाओ 100
136 133। तो फिर से आपके सामने आ गए एक बार फिर से, है ना सर? सुबह वाले भी देख रहे हैं क्या? हाँ हाँ बिल्कुल सर। 136 133 लीजिए सर। 133। सो कैसा हुआ एग्जाम आप लोगों का? मैं एनालिसिस कर देता हूँ 4-5 क्वेश्चन मैथ्स के। राकेश सर भी ज्वाइन हो रहे हैं थोड़ी देर में। 133 तो क्वेश्चन ही नहीं। 134 होगा फिर। 134 पे करेक्ट। 134 पीछे पीछे पीछे। चलिए मार्कर। चलिए, अरे भाई इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन है। सो इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, इफ लिखा ही है, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स देन ऑर्थोगोनलिटी प्रॉपर्टी मैंडेट्स। क्या होना चाहिए? इफ ए इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, तो भाई हमने क्या सीखा है? इफ ए इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स देन ए ट्रांसपोज शुड बी इक्वल टू ए इनवर्स। और अगर हम इस प्रॉपर्टी को आगे ले जाएं, प्री मल्टीप्लाई पोस्ट मल्टीप्लाई कर दें ए से, तो क्या आ जाएगा आंसर? सो आंसर विल बी ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इंटू ए, दिस शुड बी इक्वल टू आई। ठीक है, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है भाई? सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी, ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई। So we already discussed orthogonality property in our various sessions. So for an orthogonal matrix, A transpose equal to A inverse, A into A transpose should be equal to I, and A transpose into A is also equal to I. Yes, Somajit Datta, shabash. So this was the easiest question we can have in GATE, and moreover the morning session questions are also very easy. जोशी सर नेक्स्ट स्लाइड पे जाना है। हाँ जी, which one? नेक्स्ट स्लाइड। 135 135। हाँ जी। सो ये क्वेश्चन इंटीग्रेशन का है, बहुत खतरनाक क्वेश्चन दिख रहा है आपको। अरे भाई ये बहुत आसान क्वेश्चन है, आप सबको पता है क्वेश्चन में क्या है। सो x इज एन ऑड फंक्शन। It seems like, sir, you're discussing the most difficult question of the night. Hi guys, good evening everyone. So how's the Josh? GATE aspirants, GATE civil aspirants, कैसा रहा आप लोग का पेपर? I hope आप लोग 4 के आ चुके होंगे। और यहाँ पे अंकित सर, मेरे को लगता है सर one of the difficult question of the paper. मतलब guys मजाक कर रहा हूँ मैं, don't mind. Yes, see direct questions they have asked, lots of direct property question, lots of direct property question. Odd function into even function, result will be odd function. ये भैया odd function है। So odd function का double side integration, it should be 0. Yes. So 0 should be the answer. अब क्या है इसमें दम? देखिए आप कितने still some of you sir answer giving 2e, तो एक बार चेक कीजिए, there is no logic कि answer is going to come up as 2e. करेक्ट सर, नेक्स्ट पे चले जाएं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। Move forward for the next one. एक बार टैप कर दीजिए सर, बस। चलिए। Oh my God, guys! Can you guess what is this differential equation? कौन से टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन है? Concept type, just अगर ऑप्शन आ गया है तो better say the options also. Okay, but independent of the option, unless and until you try, can you say what differential equation this is? One of the easiest one. Yes, क्या बोलते हैं सर? क्या ओपिनियन है सर? क्या है सर, पेन से करना है या ऐसे बोल के बता देना है? ये बच्चे बताएंगे। बताइए guys, what type of differential equation this is given to you? सर जवाब ही नहीं आ रहा बच्चों का। Yes, either if you have the option, start giving the option. शाबाश। Yes. Come on. अनन्या रॉय सिंह एग्जैक्ट डिफरेंशियल। ना कन्वर्टेबल टू एग्जैक्ट है। इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला जाता है, मींस इट इज कन्वर्टेबल टू एग्जैक्ट। इसका हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं e पावर pdx। आ गया सर। द समवन सर नेम इज नॉट रिटन। लीनियर लेकिन नाम छुपा के रखा है सर रुस्तम। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आनी सेज करेक्ट। यस गाइस, इट्स लीनियर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन p और q फॉर्म। बता दीजिए सर एकदम। बिल्कुल कर देते सर। p विल बी -1/x and q will be the right hand side function. As you know that p and q are always the functions of independent variable. Here independent variable is x, so we can go for the integrating factor. मैं कर क्यों रहा हूँ सर ये? थोड़ा सा इन लोगों को बूस्ट अप। सर ये हमसे पहले आंसर दिखा देंगे अभी।
Yes, तो IF is the e power integral सीखे किससे हैं, PDX. सर? Yes. राकेश सर, बहुत ही बढ़िया. और बीच में एक स्टेप लिखना थी क्या सर? माइनस वो अंदर डाल दीजिए. So IF will be X inverse. x inverse 1 by x. So integrating factor is 1 by X. Solution? Yes, yes, maths easy है. As of now, आज का पूरा maths जो है, even the सारी first lot, branches, instrumentation also and civil, both the branches. IF is 1 by x. 1 by X. Yeah, of course, Sangram, you can do by variable separable also. Variable भी separate हो जाएगा. 1 plus y, क्या हो जाएगा ये? Yes, x plus y divide by x. नहीं, कहाँ से separate होगा सर? Separate हो रहा है क्या सर? नहीं हो रहा सर. नहीं होगा. This is not separable. 1 है ना right hand side. हाँ, 1 है. It is not separable. y equal to x log cx. सर k ले लिया इन्होंने, तो समझदार बच्चे हैं. So y will be x log cx or kx. This will be the answer. Option Whatever B. is your name, K, C, A, B, जो भी बोलना हो. Yes. तो सर बहुत सारे लोग B दे रहे हैं, तो this is fantastic. चलो This is हमारे बच्चे absolutely कर रहे fantastic. हैं. Yes, और yes, सर ये yes. सबसे बड़ी बात, ये इमेज क्वेश्चन है सर, हमारी क्लास का भी, हमारे मैराथन सेशन का भी. 100%, guys. I've told this in the morning session also, and here also confidently I'm telling you that why we are Almost all repeatedly the telling it is questions, easy. Why we are telling it is easy? Okay, maybe difficult for some, but because it is easy, because word to word similar question. Some questions may be slight change of data, but each and every variety is from the class. Each and every variety of the question is from the class. इस पे तो बहुत सारे क्वेश्चन किए हुए हमने. मजा आ गया. बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया. चलिए सर, इनको नेक्स्ट क्वेश्चन का मजा देते हैं. यस सर इसका क्या करें? देखिए गाइस, लेट्स हाँ आप बताइए व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस. यू फियर अबाउट प्रोबेबिलिटी, बट दिस कैन बी वन ऑफ द सिंपलेस्ट केस ऑफ प्रोबेबिलिटी. क्वेश्चन विजिबल. हाँ, sorry. Here it is the question on screen. Two unbiased dice thrown simultaneously. ठीक है, एक साथ. Okay. The probability of getting both even. The probability of getting both even. The probability of बर्नौलीज getting. ट्रायल है क्या? बताइए. सर बर्नौलीज है या नॉन बर्नौलीज है? क्या लगता है सर? सर बच्चों को पूछ रहे हैं अपन तो. हाँ, बच्चे बताएंगे. हमें तो आंसर पता ही है. ये आ गया सर, राज परमार का आंसर आ गया है. 1/4. राहुल एंड डैश डैश डैश, उनने भी 1/4 दिया हुआ है. बहुत ही बढ़िया. गौरव, आयुष, बेटा अपना नाम लिख दो. सौम्य जी, ठीक है. शुभम, निशु, कीर्ति, सोलंकी, वेंकट, नवीन, राहुल. ओके, यस, निशु, सुनील. वेरी गुड गाइस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. नॉन बर्नौलीज लिख रहा है सर आयुष. इसको क्लियर कर देंगे. पहले इसका आंसर बता देते हैं. देखिए, जब भी हम डाई थ्रो करें या कॉइन टॉस करें, कितनी भी बार टॉस कर लें, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर चेंज नहीं होता. द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर रिमेन्स कांस्टेंट इन ईच सब्सिक्वेंट ट्रायल. सो व्हेन वी आर टॉसिंग ए कॉइन और टॉसिंग ए डाई, द प्रॉब्लम इज एसोसिएटेड विद बर्नौलीज ट्रायल. Bernoulli's trials are such trials in which P and Q never changes in each subsequent trial. So this will be a problem. This is a problem associated with tossing of dice. So we can say that this is Bernoulli's trial. In Bernoulli's trial, the probability of getting even number ones, भाई die पर outcome क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Out of this, 2, 4 and 6 are the even numbers. So probability of getting an even number in a single die on a single die is 1/2. So 1/2 further multiplied by 1/2, because we have two unbiased die simultaneously tossed. So required probability will be probability of getting an even number once, since it is independent, again 1/2. So your answer will be 1/4, 25%, 0.25. If it is numerical answer type question, 0.25 should be the answer. Yes. सर कुछ बच्चों के लिए अच्छी इन्फॉर्मेशन है जो बच्चे अब हमको हेल्प करेंगे. हाँ, आई थिंक सर इतने क्वेश्चन है ना. नहीं सर, और एक दो स्लाइड मुझे दिखाना है बच्चों को, जो वो अपने जूनियर्स को इन्फॉर्म कर दें. बिल्कुल बताइए सर. So new batch starts from 8th Feb. Vision 2022. See here, Gradeup has brought Vision batch on 8th Feb. Don't miss out this opportunity. These are the key points
950 plus hours of live classes, 10,000 plus questions. सर इतने क्वेश्चन में तो 2 बार गेट निकल जाता है सर. बिल्कुल बिल्कुल गाइस. Yes, some of you are asking forenoon solutions are already updated for civil forenoon solutions PDF is already updated. Okay, that contains around I think Joshit sir 35-40 questions होंगे and it will keep updating है ना. We'll by the night we'll give you all questions. Okay, so do contact 9650052904 in case of any query, and we are not expecting you to contact. We are expecting what from your side, that you should inform your juniors, you should inform your friends who are aspiring for GATE 2022 and help us in helping you for the next year also. Definitely guys, and you know you are looking into the content, and if you have got really good marks in the exam, so why not help your juniors, help your youngers to get the same performance in the next examination. Grow and let everyone grow. Simple सी बात है. कुमार पूछ रहा है सर आप किस मैराथन की बात कर रहे हैं? 1st Feb, 2nd Feb. अरे 1st और 2nd को जो आंधी आई थी वो मिस कर दी क्या आपने? बिल्कुल गाइस, तो 1st और 2nd को एक मैथ्स का मैराथन लिया था सर ने और मैंने मिलके, और उसमें ऑलमोस्ट बहुत सारे 70,000 व्यूज है सर उसमें. इतने व्यूज हो चुके हैं. न्यू बैच टाइमिंग्स अनन्या यू कैन वॉच ऑन द ग्रेडअप ऐप टाइमिंग्स के लिए. नंबर स्क्रीनशॉट लीजिए. नंबर स्क्रीनशॉट लीजिए. क्लास टाइमिंग्स और एनी अदर डिटेल्स, दिस इज द नंबर 9650052904 52904. ओके, वर्कबुक के बारे में बता देते हैं सर. ये तो ग्रेडअप का सबसे बड़ा गिफ्ट है स्टूडेंट्स के लिए. वर्कबुक फॉर गेट 2021. सर इसके फीचर्स थोड़े लिस्ट कर दीजिए. आप आपके सामने थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दीजिए. जोशी सर आप भी ज्वाइन हो जी. अनिरुद्ध सर. Hi. So guys, finally, this was the most demanding thing, I think. So as soon as you are going to get the GradeUp Server subscription, you are going to get this workbook as well. And guys, the subjects this workbook is gonna contain are these much. I think nothing is missed. Every subject is here. Also, the questions here will be in level, right? So there will be some easy question in first level and there will be some advanced question in the second level. All right, so Anu sir, please tell me how students are going to get benefited by this workbook. So thank you Joshit sir. The point is that actually many students prepare for different types of examinations. Some prepare for GATE, some prepare for ESC prelims, some even prepare for the mains examination. So this particular workbook is catering to all the demands depending upon the levels. First level, second level and the third level. So that is how this workbook actually stands out. Compared to the other workbooks available in the market, that's how it stands out, because it actually gives you that levels different and it completely covers all the subjects and all the types of also. Yes. MSQ, NAT as well as MCQ. Yes guys, so and let me tell you whenever we are taking the class, we give you the complete entire theory. Okay, all derivations, all concepts are discussed, and in fact the lots of questions are discussed in the class. Okay, but to test your real preparation, you need practice, and everyone needs a practice. Okay, whenever even we are dealing the subject in the quite of detail, the students are demanding for practice. Yes, करना ही चाहिए. So guys, if you are looking for a detailed practice, level wise question, MCQ question, NAT, MSQ, all variety of questions of your competitive exam, so then this workbook entirely containing all subjects will be very beneficial for you. That's what we are coming up with. All right. Okay, guys, Anirudh sir is going to come up for some question discussions. But before that, abhi, we are, aptitude ke questions bhi aa rahe hain, because all of these are memory based questions, and as quickly as possible we are trying to extract the questions. एक memory based question मुझे aptitude का just पता चला है, मैं आपको बता दूं. Okay, because many of you were worried about the spatial aptitude, na? Many of you were worried about the spatial aptitude. So yes, there has been spatial aptitude question in the morning also. और मैंने आपको एक चीज clearly बोली थी. IIT Bombay has given the sample question of mirror image, and that becomes very important. ठीक है, पहली बार पूछ रहे हैं, अगर कुछ sample दिया है तो they are going to relate to that sample or at least keep the question of that. First half में instrumentation and civil, they asked a common question. Triangle का mirror image था. Okay. Now in this session they have asked the question. In this syllabus they have given a word, और word वाले problems भी हमने किए हुए थे. The word given to you is, this is the word given to you, and what is the language? No, the language इन्होंने use किया है वो आपके लिए और technically easy है, because you guys are engineers. They have asked the image of this word about the x-axis. The image of this word about the horizontal x-axis. Usually we call it as water image.
Okay, mirror images are considered about the y-axis. Water images are considered about the x-axis. Water image बोलते तो शायद आप में से कुछ लोग को नहीं पता होता कि how to solve water image, अगर नहीं पढ़ा है तो. लेकिन guys, अगर आपने नहीं भी पढ़ा है, okay, you are engineers, you know what is the x-axis. You know what is the x-axis, horizontal axis, and when I take the mirror image of this about the horizontal axis, how? See, this is what the P is going to be. In fact, guys, I don't. So this is memory based. I don't have the options right now. Options होते ना तो ये और 1/10 question हो जाता level 1/10 because I will tell you when the options are there ना only 1 or 2 right or wrong words will tell you. ठीक है, option नहीं है तो भी कर लेंगे. H तो क्या है? H तो symmetric दिख रहा है मुझे तो its image will be same. Okay, ये आपका चला गया Y. Okay, ये आपका चला गया Y. Okay, only top to bottom inversion होगा. Left वाला left में रहेगा, right वाला right में रहेगा. Left to right inversion तब होगा when you have the mirror image. Okay, ये आपका हो गया A. ओके, टॉप वाला बॉटम में एक्स इज अगेन सिमेट्रिक दिख रहा है, आई सिमेट्रिक दिख रहा है, एस वाला देख लीजिए. ठीक है, लेफ्ट से ओपन हो रहा है ना तो लेफ्ट की तरफ ही रहेगा. नो लेफ्ट टू राइट इन्वर्जन, ओनली द टॉप टू बॉटम इन्वर्जन. दिस इज द मिरर इमेज. दिस इज मिरर इमेज. ओके, दैट्स व्हाट सुनील वही बोल रहा हूं ना ये क्या. हाँ गाइज, एक और क्वेश्चन था, अभी उसका ऑप्शंस हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं. आपके सामने फिर से हम लोग लाइव आएंगे मैथ्स और एप्टीट्यूड के कुछ क्वेश्चंस के साथ. बट देयर वाज अ 2x2 मैट्रिक्स एंड द क्वेश्चन वाज there was a 2x2 matrix and the question was what is the smallest eigenvalue and the corresponding eigenvector. Smallest eigenvalue and corresponding eigenvector. Reason हम लोग अभी नहीं ले रहे हैं because you know eigenvector निकालने का we know the conventional method, but you know we want to come up with the solution that is best for exam. Conventional method से we are not going to solve the exam, and if the options are there eigenvector is ऐसा ही तो होता है, ax equal to lambda x, ax equal to lambda x, right? Right. So let's get the options. We are trying to collect more questions and we'll come back with that questions also. Maths में भी और 4 question नहीं हो सकते. Maths there will be at least 8 to 9 questions. So if we extract this, we'll get more questions. And right now Anirudh sir will be talking about some more questions that we have extracted from the technical portion of the civil. Thank you, sir. Sir, वो slides, sir. Slide number 80. So everybody come on. So now Anirudh sir is here with us. So everybody full power के साथ एक बार welcome तो कर दो यार. Sir is here from Kolkata. Directly from Kolkata he is here. So full power के साथ एक बार welcome हो जाए. And sir कौन-कौन सब्जेक्ट आप डिस्कस करेंगे अभी? Sir, geotechnical engineering. शानदार. And also construction management. Gazab. And so guys, questions here. As you know, most of the questions were there from geotech, right? And also material management is also here, right? So full power से एक बार जरा हार्ट साइन हो जाए, बारिश हो जाए हार्ट साइन की एक बार फुल पावर के साथ. तब तक सर कर रहे हैं, ठीक है भाई, एकदम लग रहा है सेशन. डोंट वरी. IIT में MTech मिनिमम मार्क्स आपके कितने आ रहे हैं बोलो. I'll tell you. I'll give you a rough idea. I'm telling you because when we were at this stage when we had to fill the forms, so we have done the complete research that which IIT is having how much cutoff for which branch, right? Like branch in our like particular civil only. There will be a lot of branches like hydraulics will be there, then environment will be there. I'm from hydraulics, sir is from environment, and then also there will be geotech, there will be disaster management, there will be water resource, there will be structures, there will be बहुत सारे है भाई. ट्रांसपोर्टेशन बहुत होता है, राइट? आ जाओ फटाफट से यार. फुल पावर चलो जम के amazing. So we can see lot of heart signs. So guys, if you are getting like if you are asking me about getting MTech admission in IIT, I'm talking about IIT. So someone has quoted just now that for 60 marks. So guys, 60 marks में you will get it, don't worry. ठीक है, you will get it, don't worry. And also guys, those who don't know, from tomorrow we are having an amazing series also for post gate guidance, right? Every day 7 p.m. the topics are very useful for you all. So at 7 p.m. post gate guidance only on Gradeup Gate YouTube channel. All right, only on Gradeup YouTube channel. So Anirudh sir will be here in just a moment, right? Just a moment. तब तक ये क्वेश्चन करोगे क्या? फुल पावर से क्वेश्चन करोगे. The question was from your stopping side distance was given to us, reaction time they were asking, deceleration was given to us, and also they have given one more thing was there, velocity was given, right?
यही था ना क्वेश्चन. एक बार मेरे को वैल्यू बोलोगे, मैं अभी करके दिखाता हूँ सामने सामने, राइट. सो इसमें कुछ भी नहीं था दोस्त. You can do this question. It is not that much tough. A by G. You just had to write F value as A by G and everything else you know. Everything else you know. Let me see if I have the. ले गए लगता है रुस सर अपने साथ ही. कोई बात नहीं, मार्कर नहीं है तो क्या हुआ, राइट. चलो करते हैं ऐसे ही सही. हाँ जी, कैन यू प्लीज गेट मी द वैल्यू गाइस, एक बारी फटाफट से, एक बार फुल पावर के साथ. वो नहीं बना, अरे बाबा यार करवाया था ना क्लास में. आई हैव टोल्ड यू द फर्स्ट थिंग दैट आई हैव टोल्ड यू व्हेन आई हैव स्टार्टेड द मिडनाइट सेशन. डू यू रिमेंबर द मिडनाइट सीरीज एवरीवन? रात को 12 बजे भाई साहब वी वर डूइंग द ट्रैफिक इंजीनियरिंग एंड इन दैट आई हैव टोल्ड यू दिस वन थिंग. रिमेंबर? बोला तो था यार, अभी ऐसा याद रखना था. क्या कर रहे हो? यस सर, 90 वेलोसिटी था एंड 3.5 इतना था. एसएसडी बोलो तो कितना था? हाउ मच वाज द एसएसडी एवरीबॉडी? एसएसडी कितना था एक बार बोलो. एसएसडी कितना था एक बारी बोलो जरा फटाफट से. आई थिंक 140 था ना, राइट. सो यू नो दिस, राइट, यू नो दिस व्हाट इज गोइंग टू बी, व्हाट इट विल बी. जस्ट गिव मी अ सेकंड. सर उंगली से लिखवा रहे हो आप. राइट. सो v into tr, दिस इज व्हाट वी ऑल नो, राइट. v square by 2gf. इतना आता था ना, इतना यू न्यू, राइट. इतना तो यू न्यू. आई नो आई हैव टोल्ड यू सो मेनी टाइम्स यार, सो मेनी टाइम्स. तो बस इसमें एक चीज बदलना था, इसकी जगह करना था a by g एंड दोस्त द वैल्यू ऑफ a यू हैड विद यू एज 3.5 और हाउ मच, राइट. 3.5 सही था. 3.5 इधर रखने का था, 9.81 इधर रखने का था एंड व्हाट एल्स, 9.8 इधर रखने का था. इधर कितना रखोगे? इधर रखोगे 0.278 into 90. कोई बोला मेरे को वेलोसिटी 90, मैं आपका भरोसा किया इसलिए 90 ले लिया, राइट. इधर वी हैव टू कैलकुलेट दिस एंड इट विल बी इक्वल्स टू 140. इट विल बी इक्वल्स टू 140. सही है, सेट है, आंसर आ गया, राइट. अनुज सर रेडी? आ जाइए. मुझे एग्जिट करना है थोड़ा. एग्जिट इधर से जाएगा, वो रिफ्रेश करना है. एग्जिट करके यहाँ से रिफ्रेश एंड प्रेजेंट. सर एक सेकंड, स्लाइड नंबर कौन सा चाहिए सर? मुझे 80 चाहिए. हाँ, yes. So, everybody, quickly let me know in the chat section. Everybody, कैसा गया आज का एग्जाम दोस्त? कैसा गया आज का एग्जाम? हाईवे से तो फोड़ने, मतलब एकदम हाईवे और हाइड्रोलॉजी से तो एकदम मतलब बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आया दोस्त. व्हिच आई वाज वाचिंग यू नो ओवर देयर. हाईवे और इससे तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आया. सो लेट्स डिस्कस सम ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग. देखते हैं सर व्हाट इज द आंसर क्विकली. ओके, मिरर इमेज वाला कॉन्सेप्ट आया था क्या दोस्त? मिरर इमेज वाला कॉन्सेप्ट आया था क्या सर? चलो ओके, फाइन क्विकली. चलिए दोस्त, तो सॉइल 1 और सॉइल 2 ऐसे दो सॉइल का दिया हुआ था सर. एंड यू आर आस्क्ड अबाउट द MV1 by MV2. तो सबको एक चीज पता होगा सर, MV1 by MV2 इफ आई एम टॉकिंग अबाउट. सो एवरीबॉडी आई थिंक you know knows about this particular thing sir, that is equal to you know सबको एक चीज पता है बॉस कि बॉस MV1 by MV2 होता है बॉस क्या, कि डेल्टा V1 by V1 बाई डेल्टा सिग्मा बाई डेल्टा V2 by V2 बाई डेल्टा सिग्मा. बोला है क्या भाई? स्ट्रेस इंक्रीमेंट सेम है बॉस, तो डेल्टा सिग्मा गया ना मार्केट से. चलो तो सर डेल्टा V1 by V1 बाई डेल्टा V2 by V2, तो सर डेल्टा V1 by V1 क्या हो जाएगा सर? डेल्टा V2 by V2 क्या हो जाएगा सर? तो यहां से सर आंसर नहीं आएगा क्या? क्विकली लेट मी नो इन द चैट सेक्शन सर, आंसर नहीं आएगा क्या सर? CV1 by CV2 था क्या सर? मुझे पता नहीं था क्या था सर. MV1 by MV2 था. मुझे जो क्वेश्चन मिला है दैट वाज MV1 by MV2. दैट्स व्हाई इट्स ऑफ कोर्स ग्रेड अप बॉस. CV1 by CV2 था. सो ऑन दैट क्वेश्चन आई डोंट नो, आई डिडंट नो द आंसर सर. अगर CV1 by CV2 पूछता तब तो और आसान हो गया सर, क्योंकि आपको पता है ना K इज इक्वल टू होता है CV इंटू MV इंटू गामा W, ये होता है सर. सो सर फ्रॉम हियर यू आर गेटिंग CV इज इक्वल टू K by MV गामा W. द क्वेश्चन दैट आई हैव रिसीव्ड फ्रॉम सम ऑफ माय स्टूडेंट्स एक्चुअली. तो इस वहां पे ये था, तो K by MV गामा W तो और आसान हो गया. K1 by MV1 डिवाइडेड बाय K2 by MV2. K1 K2 तो दिया हुआ है क्वेश्चन पे, K1 K2 तो दिया हुआ है क्वेश्चन पे. सो इट बिकम्स इवन इजियर.
सो इट बिकम्स इवन इजियर. MV1 मतलब जस्ट आपको पुट करना है क्या, इट्स AV बाई 1 प्लस ई नॉट, मतलब डेल्टा ई बाई डेल्टा सिग्मा बाई 1 प्लस ई नॉट. तो बेसिकली द क्वेश्चन इज गोइंग टू कम डेल्टा दैट इज नो MV1 के जगह में पुट कर दो. व्हाट सर, थैंक यू लीला गणेश. हाइड्रोलिक ग्रेड रेशियो. ओके सर, K1 K2 0.125 एवरीबॉडी. सो K1 बाई K2 इज गिवन. MV1 बाई MV2 के जगह क्या पुट करो, MV1 के जगह पुट करो AV बाई 1 प्लस ई नॉट. MV2 के जगह पुट करो AV2 बाई 1 प्लस ई नॉट. ठीक है. सो फॉर AV you know delta E by delta sigma is AV. For 1 plus E naught, 1 plus E naught रहने दो बॉस. So you are getting this answer. Everything is given in the question. E1 E2 दिया हुआ है तो डेल्टा E सॉइल 1 के लिए पता है, डेल्टा E सॉइल 2 के लिए पता है, हाँ या ना. E1 E2 दिया हुआ है सॉइल 2 के लिए भी, so you know also delta E for the soil 1 and soil 2. Fine. So quickly let me know in the chat section, so whether everybody is getting it, yes or no, right? Hit the like button and share the session with everybody. So it's a very very easy question. नेक्स्ट क्वेश्चन जो था सर वो था आपका ये एरिया रेशियो पूछा था सर. एवरीबॉडी आई थिंक यू नो ग्रेड अप को मेडिसी के किस तरह से अच्छा माने ज्वाइन करे, प्लीज बताए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज वी आर हैविंग द टॉप पुल ऑफ फैकल्टीज इन द मोस्ट अफोर्डेबल रेट. दैट इज द मेन थिंग दैट इज ग्रेड अप इज विशिंग टू ऑल ऑफ यू. सो एरिया रेशियो सबको पता है सर, क्या होता है एरिया रेशियो. एवरीबॉडी क्विकली लेट मी नो द चैट सेक्शन व्हाट इज द आंसर सर. एरिया रेशियो. ओके, एरिया रेशियो का मतलब क्या सर, इट्स सिंपली D2 स्क्वायर बाई D1 स्क्वायर बाई D1 स्क्वायर. में बोला था जो छोटा वाला होता है वो नीचे आता है, जो छोटा वाला होता है. सो इट्स 52 स्क्वायर माइनस 48 स्क्वायर बाई 48 स्क्वायर इंटू 100%. जो भी आएगा आंसर 17 पॉइंट कुछ शायद आ रहा था. ओके फाइन, लेट मी नो जो भी आंसर आ रहा था 52 स्क्वायर माइनस 48 स्क्वायर बाई 48 स्क्वायर होगा. याद रखना जो छोटा होगा वो नीचे रहेगा सर. ओके फाइन, let me know in the chat section sir what about the rest of the answers. Okay, next is this question which was there. Cutoffs are 30. Okay, 30 something like that. Quickly hit the like button man and share the session with everybody. Fine. WL दिया हुआ था कुछ, एक bitumen analysis वगैरह कुछ दिया हुआ था. I think you know as far as I remember सर लिक्विड लिमिट दिया हुआ था, प्लास्टिक लिमिट दिया हुआ था, समथिंग लाइक दैट. नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट दैट इज आल्सो गिवन टू यू. ओके, और सर यहां पे आपको पूछा गया था टफनेस इंडेक्स, टफनेस. एंड सर द सेकंड थिंग दैट इज आस्क्ड इज लिक्विडिटी इंडेक्स. क्विकली हिट द लाइक बटन मैन एंड शेयर द सेशन विद एवरीबॉडी. सो एवरीबॉडी नोज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टफनेस इंडेक्स. Quickly let me know in the chat section sir what is the meaning of toughness index. Anybody knows? So it is sir the plasticity index by the flow index. Plasticity index मतलब क्या होता है, liquidity minus liquid limit minus plastic limit. Flow index group question में दिया हुआ है, so it's 33 by 27. So the answer is coming as I think 1.22 के करीब कुछ. And if I talk about liquidity, मैंने बोला था क्या liquidity में liquid नहीं रहेगा, लिक्विडिटी में लिक्विड नहीं रहेगा बोला था. क्विकली हिट द लाइक बटन एंड शेयर द सेशन विद एवरीबॉडी. सो इट्स W माइनस WP बाई IP. W मतलब नेचुरल जो है रे, दैट इज 32 माइनस 27 बाई IP. IP मतलब 60 माइनस 27. सो इट्स 5 बाई 33 दैट इज 0.15. क्विकली हिट द लाइक बटन एंड शेयर द सेशन विद एवरीबॉडी. यस करेक्ट. Okay, moving over to the next question. This was a question which was a little bit bigger question actually दोस्त. ये एक थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन था, तो इसमें बनाना है बस डायग्राम बनाने के बाद I think everybody can do that. What is the number of just you have to just add. तो मैंने अभी डायग्राम आपके लिए बना रहा था यहाँ पे, right sir. तो the first one was that actually A depends upon nothing, right? Activity A. तो मैं कुछ इस तरीके से बना रहा था for those people, right? Quickly man, hit the like button and share the session with everybody. तो मेरा डायग्राम मैं भी बना रहा था यहाँ पे, तो कुछ मेरा इस तरीके से आ रहा था बॉस. ओके, B depends upon A, C also depends upon A. बहुत अच्छा. देन मैन क्या बोला है देखो, E and F भैया दोनों ही डिपेंड करता है C पे. E and F दोनों डिपेंड करता है C पे. D डिपेंड करता है B पे. वेरी गुड. G डिपेंड करता है D पे. ओके, देन बोला है देखो क्वेश्चन में
कंफ्लिक्ट कहां पे होता है, मुश्किल कहां पे होता है सर? यस, मुश्किल कहां पे होता है सर? मुश्किल होता है इधर, जी डिपेंड्स अपॉन बोथ डी एंड डी। क्या करें सर? व्हाट टू डू इन दिस ओकेशन? डमी लगा दो, डमी लगा दो दोस्त। क्या हो जाएगा? सॉरी, just put a dummy over here sir. Okay, put a dummy over here. Everyone quickly hit the like button, share the session with everybody. I don't know the answer man, but just diagram मैं बना दे रहा हूँ, बाकी लोग आंसर कैलकुलेट कर लेना। Right, so it's H, उसके बाद था कुछ ऐसे K, ऐसे था कुछ J, right? And sir, what was the answer coming? यहाँ पे था ये and it was given like that, dotted dummy. क्यों dummy sir? Why dummy? Because sir, you are watching over here, H is the activity that depends upon both F and G. एक activity जब दो activity पे depend करता है, that is F पे भी depend कर रहा है, G पे भी depend कर रहा है, H. Similarly boss, D and E दोनों पे depend कर रहा है, G. So G is depend upon both D and E. Understanding what I'm trying to say? So in this occasion, actually the questions are going to come. Okay, moving over to the next question, boss. Moving over to the next question, जो कि था शायद, हाँ, strain hardening of structural steel means, this was a question, right? Strain hardening of structural steel means what? Quickly let me know in the chat section sir, what is the answer to this particular question? What is the answer to this particular question? मतलब जो भी है दोस्त, डायग्राम बनाना है आपको। and what was the main problem was that actually जहां पे there are two activities, कि एक एक्टिविटी दो एक्टिविटी पे डिपेंड कर रहा है, that was you have to make the dummy. That was the only trick in this question, right? Quickly let me know in the chat section sir, what is the answer to this question? इसका आंसर बता दो जल्दी से जल्दी। Quickly hit the like button, share the session with everybody so that everyone can enjoy this wonderful session. इसका आंसर बता दो दोस्त। अरे strain hardening क्या होता है, इसका आंसर कौन बताएगा भैया? कौन बताएगा इसका आंसर? strain hardening, I had told you, especially the vision batch people where I have taught this particular thing, दोस्त आग लगा देना है, दोस्त लगा देना है आग। कमेंट सेक्शन पे लगा देना है आग। बिफोर प्लास्टिक फ्लो नहीं होता है दोस्त, ये नहीं होता ये। सो इट्स एक्चुअली स्ट्रेंथनिंग स्टील मेंबर एक्सटर्नली, ये भी नहीं होता है सर। ये तो सारे ऑप्शन सेम है ये तो सर सारे ऑप्शन सेम है ये सर एक्चुअली सारे ऑप्शन यहाँ पे सेम पुट कर दिए, so actually the point is over there sir। यहाँ पे तो सारे ऑप्शन यहाँ पे same put कर दिया, but the actual question where which I had they just made a mistake. I think the typing team had made a mistake. Okay, the actual question I have over here, the actual question was, the last option is going to be correct, option D, कि experiencing higher stress than yield stress with increased deformation, ये होगा experiencing higher stress than yield stress, experiencing higher stress than yield stress with increased deformation, यही होगा एक्चुअल आंसर। मतलब बेसिकली व्हेन यू आर ड्रॉइंग इट द कर्व, ठीक है सर, जब आप कर्व ड्रॉ करते हो तो इसके बाद क्या बोलते हैं उसको, जब yield stress क्रॉस कर जाता है ना, जब yield stress क्रॉस कर जाता है व्हेन, ओके जस्ट हैविंग अ कॉल मैन, ओके। So what I was having is that yes right, तो उसमें आप लोग टिक मार चुके हो क्या कि जो ज्यादा दोस्त है, मतलब है कि ज्यादा स्ट्रेस yield स्ट्रेस से ज्यादा, yes this was actually a typing mistake, don't worry about that Abhishek। The point is that experiencing higher stress than yield stress, तो वो मजबूत हो जाता है दोस्त, experiencing higher stress than yield stress owing to an increased deformation, that is actually known as strain hardening। देखो ना, नाम से पता चल रहा है, थोड़ा अगर आपको अंग्रेजी आता है तो आप कर लोगे इसको। strain hardening मतलब ज्यादा स्ट्रेन होने के लिए हार्ड हो रहा है, नाम से पता चल रहा है। जिसको थोड़ा अंग्रेजी आता है वो कर लेगा क्वेश्चन। स्ट्रेन से हार्ड हो रहा है मतलब क्या, स्ट्रेन मींस व्हाट, हाई डिफॉर्मेशन, उसके वजह से हार्ड हो रहा है मतलब क्या, वो ज्यादा स्ट्रेस ले पा रहा है। सिंपल, एब्सोल्युटली सिंपल। क्विकली लेट मी नो इन द चैट सेक्शन सर। ओके फाइन। इसके बाद एक क्वेश्चन था हमारा, एन रिजर्वायर तो नहीं हो सकता है सर, ये ए रिजर्वायर होगा विथ लाइफ कैपेसिटी ऑफ 3000 मिलियन क्यूबिक। एक्चुअली ये तो क्यूबिक मीटर पर डे, आई थिंक ऐसे कुछ तो था शायद क्वेश्चन में। 10 पीपल हु हैड एक्चुअली सेंट, आई डोंट नो। ओके yes, so the point is that what will be the duty, ड्यूटी मतलब तो सर नॉर्मली जो आप करते हो वो क्या होता है दोस्त, एरिया बाय डिस्चार्ज। यही तो सबको पता है ना सर, हेक्टेयर बाय क्यूमेक, एवरीबॉडी नोज इट राइट, हेक्टेयर बाय क्यूमेक यही होता है बॉस। अरे दोस्त आग लगा देना है कमेंट सेक्शन पे, गुरु कमेंट सेक्शन पे क्या लगा देना है, आग आग आग, क्या लगा देना है कमेंट सेक्शन पे, आग। तो क्यों नहीं लग रहा है गुरु,
क्यों नहीं लग रहा है कमेंट सेक्शन पे आग जल्दी से जल्दी लगा दो कमेंट सेक्शन पे आग, राइट। सो इट्स द पॉइंट इज दैट एक्चुअली द पॉइंट ओवर हियर इज दैट ये 3000 होगा कि 6000 होगा, आई जस्ट मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन था तो किसी ने ऐसे बताया। सो द पॉइंट वाज दैट टू फिल कैपेसिटी, ठीक है ना सर, व्हेन दे आर सेइंग टू फिल कैपेसिटी 8.64 B by D, तो सर B कहां से मिलेगा आपको? ओके, सावन इज सेइंग 25 सर बेस पीरियड गिवन एज 120 days। ओके फाइन, थैंक यू फॉर सेइंग द आंसर। सो 120 days अगर PDF दोस्त आग लगा दो कमेंट सेक्शन पे। क्या कर रहे हो दोस्त? कमेंट सेक्शन पे आग कौन लगाएगा? अगर एंजॉय कर रहे हो तो कमेंट सेक्शन पे आग कौन लगाएगा बताओ, राइट। सो इट्स B is equal to 120 days। सो ड्यूटी इनटू डेल्टा इज इक्वल टू है तुम्हारे 864 B, सबको पता है दिस थिंग। नाउ सर एवरीबॉडी नोज दैट ड्यूटी को हम लिख सकते हैं इस तरीके से, एरिया बाय डिस्चार्ज इनटू डेल्टा इज इक्वल टू 864 B। यहां पे सर डेल्टा वाज गिवन और नॉट सर? बेस 120 दिया हुआ था, ओके फाइन सर। सो नाउ एक्चुअली फ्रॉम हियर यू विल गेट द ड्यूटी इन दिस फैशन। एक्चुअली देखो क्या मैं बोल रहा हूं दोस्त, यहां से आपको ये नहीं करना है, आपको डेल्टा बेसिकली निकाल लेना है सर। डेल्टा यू विल गेट फ्रॉम द वॉल्यूम बाय द एरिया सर, है ना सर। ड्यूटी आपको मांगा है तो आपको डेल्टा मिल जाएगा सर। डेल्टा मतलब क्या कि कितना वॉल्यूम ऑफ थिंग, एक्चुअली कितना वॉल्यूम, कितना जो क्या बोलते हैं उसको तुम्हारे, What is the depth of water that is given, right? तो यहां पे डेप्थ ऑफ वाटर नहीं बोला, यहां पे एरिया बोला है। और क्या बोला है देखो, बोला है क्या वॉल्यूम 3000 मिलियन क्यूबिक मीटर का वॉल्यूम है, बट टू फिल कैपेसिटी मतलब टोटल कितना वॉल्यूम सर? 3000 इंटू 2, इट्स सर इट्स नॉट 3300 था। चलो देख रहे हो, कोई ना कोई स्टूडेंट ही याद करके मुझे बताया दोस्त, मैं तो एग्जाम देने नहीं गया ना। सो द पॉइंट इज दैट एक्चुअली, ओके फाइन। सो अगर ये 300 है, मैं तुम्हारी बात मान के कर रहा हूं, द मेथड देख लो बस, मेथड देख लो बस दोस्त, मेथड बस देख लो। तो इट्स 300 क्यूबिक मीटर, 300 मिलियन, तो टू फिल कैपेसिटी मतलब क्या? टोटल 600 मिलियन क्यूबिक मीटर मैंने इस्तेमाल किया। 600 इंटू 10 to the power 6, दिस द वॉल्यूम, दिस द एरिया सर। 40,000 इंटू 10 to the power 4, सो इतना आएगा आपका मीटर, इंटू 10 स्क्वायर कर लेना तो आंसर विल बी इन सेंटीमीटर, राइट। दिस इज द डेल्टा पुट ओवर हियर 864 इंटू 120 B। अगर आप बोल रहे हो दिया हुआ है तो दिया हुआ है, फ्रॉम हियर यू आर गोइंग टू गेट दिस ड्यू D। ये जो डेल्टा है ये डेल्टा यहां पे आ जाएगा। एवरीबॉडी लेट मी नो इन द चैट सेक्शन सर। आई जस्ट इग्नोर द वैल्यूज बॉस, वैल्यूज को इग्नोर करो, जो क्वेश्चन में जो दिया हुआ है दैट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, एक्चुअली अंडरस्टैंड द क्वेश्चन बॉस, अंडरस्टैंड द क्वेश्चन दोस्त। वैल्यू क्या 300 दिया हुआ, 3000 दिया, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। अंडरस्टैंड द क्वेश्चन बॉस, क्वेश्चन में 300 दिया हुआ, 3000 दिया हुआ, डजंट मैटर एट ऑल, राइट सर, फाइन। सो over to Krishna sir right now. He will be discussing the questions on environmental engineering, but before that let me just talk to you regarding this particular thing, that for the next 2 days you are going to have 50% discount on the 2022 batch. 50% discount, that is a part of the February Mela, and the enrollment starts actually from February 8, 2021, right? So actually if you are using this code GATE 2021, so you are going to have 50% discount. Just stay tuned boss, don't leave the session, because Krishna sir is coming with the top questions which are asked actually in the environmental engineering with a full detailed solution, right? And sir, also the point is that stay tuned also, because post gate guidance session will be starting from 8 February. What to do after gate according to your marks, क्या क्या आपको करना है, क्या क्या इस बार आपको options मिल सकता है, everything is going to be discussed boss, right? And yes, so please over to Krishna sir, he will be discussing the questions on आफ्टर गेट का सेशन होगा ना सर। दोस्त मैं तो यहाँ पे रहूंगा नहीं दोस्त, व्हाट्स योर नेम? यावर, ओके, आई विल बी देयर फ्रॉम कोलकाता एक्चुअली, ठीक है। सो द अदर फैकल्टीज विल डेफिनेटली टेक, आई विल बी ऑल्सो टेकिंग सम ऑफ द सेशंस फ्रॉम देयर इटसेल्फ, फ्रॉम कोलकाता इटसेल्फ, so don't worry about that.
some faculties who will be here, definitely they are going to take the sessions. Don't worry about that. We are always with you people. Any doubt, just subscribe to our Telegram channel, and definitely you are going to get all those results. Over to Krishna sir, please. Hello guys, so let's discuss the environmental engineering question guys. So no doubt we have 3 questions today. हमारे पास 3 क्वेश्चन है जी जो हम डिस्कस कर लेंगे यहाँ पे, और बहुत इजी है. आई थिंक सो द डेटा इज लिटिल बिट लेंथियर बट द क्वेश्चन इज वेरी वेरी इजी. आई थिंक इट विल बी मोर इजी क्वेश्चन फ्रॉम द इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग. मुझे ऐसा लगता है बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इससे अलावा कुछ आ नहीं सकता था. ठीक है, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू गाइस, दैट इज ए कलर चेंज in hardness test due to 0.01 molarity EBT. Guys, this particular thing is wrong over here, right? It is the correct one, that is your EBT, which is nothing as what? Aerochrome black tea जी, है ना? Aerochrome black tea है. क्या कलर चेंज होता है? You know that guys, that is wine red to blue. And how it is possible? Let me tell you guys. You know that guys, we have two thing, that is calcium plus 2 ion and magnesium plus 2 ion, which give hardness to us, right? And it will react with the EBT first. It will react with the EBT first in the initial condition. Whenever they are reacting guys, then they will produce a red color, which is a wine red color. ठीक है, ये कौन सा कलर होता है जी? वाइन रेड कलर. दिस इज द इनिशियल इंडिकेटर व्हिच वी आर एडिंग इनटू द वाटर सो दैट वी आर एबल टू फाइंड आउट द how much quantity of EDTA is required to change this color from wine red to blue. Now the original color of this EBT is what? Original color क्या होता है जी? Blue होता है इसका. But when EBT will try to react with such type of cations, then it will produce wine red color. Okay, now let us suppose if we add EDTA over here. So what happened guys, this EBT is replaced by the EDTA, which is our titrant. After reacting completely with the EDTA, guys, EDTA, that is your ethylene diamine tetraacetic acid, your EBT will become free. क्या बन जाएगा जी? ये फ्री हो गया. अगर ये फ्री हो गया, then it will produce a blue color, which is the original color of EBT. This is the original color of EBT, and this product is colorless. ये क्या होता है जी? Colorless होता है. So the correct option is what? Wine red to blue, right? चलिए next question. Okay, next question we have from the filtration tank. ठीक है जी, filtration से next question था बच्चों. A water filtration unit is made up of uniform size particle of 0.4 mm diameter with a shape factor of 0.84. Now guys, they will definitely provide you some data which will try to conflict you, है ना जी? आपको कुछ ऐसा डेटा मिलेगा ही मिलेगा जो आपको कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, कंफ्लिक्ट क्रिएट करेगा, राइट? लेट्स मूव ऑन. द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ पार्टिकल इज 2.55. ओके सर, द डेप्थ ऑफ फिल्टर बेड इज 0.7. इट इज गिवन टू अस. ओके, द पोरोसिटी इज 0.35. अभी देखिएगा आप आगे कितना डेटा यूज आता है, राइट? द फिल्टर बेड इज टू बी expanded to a porosity of 0.65. It means we have a neta expanded over here which is equal to 0.65, right? By hydraulic backwash. Okay sir, if the terminal settling velocity of sand particle during the backwash is 4.5, this is centimeter guys, centimeter per second. The required backwash velocity is, now from here, अरे जी यहां से लेके यहां तक जो कहानी रची गई है ना, कोई काम की नहीं है. There is no use of such data guys, right? Just you need to write a formula which is already known to you. Neta expanded can be written as VB by VS raised to power 0.22, right? This is the relation generally we are using to find out the expanded porosity of filter bed. Okay sir, now neta expanded is equal to how much? It is equal to 0.65 is equal to what is backwash velocity which is given to us? कोई डेटा नहीं दिया जी, कोई नहीं दिया. हमें ये पता है बस टर्मिनल वेलोसिटी कितनी है, दैट इज आवर टर्मिनल सेटलिंग वेलोसिटी.
So can I write it, guys? This one is VB upon VS. VS is equal to how much? It is 4.5 centimeter per second. So can I write it, guys? This one is 4.5 into 10 raised to power minus 2 bracket raised to power 0.22. Similarly, guys, this one is raised to power 0.22. After solving this one, you are able to find out the backwash velocity. अब आप बोलो यार क्या था सर, ये क्या था? बहुत ही आसान क्वेश्चन था. इसमें क्या था? एक मशीन पता है जी. दिस इज मशीन, राइट? वी हैव टू पुट इनपुट ओवर हियर एंड वी विल गेट द आउटपुट. ये मशीन है और कुछ नहीं है. There is no conceptual thing over here. कोई conceptual नहीं है. तो VB का वैल्यू यहाँ पे जो आ रहा है बच्चों, that is 6.35 into 10 raised to power minus 3 meter per second. So A is the correct answer for this question. A सही आंसर है. Okay. Next question. I think previous one. It is empty. Refresh. Exactly. Okay, grid chamber here. I think there is one question over here. EBT हो गया, grid chamber. Yes, yes. Okay. Now this is the next question which is given to us, guys. A grid chamber. ये देखो यार, typing mistake. This is a grid chamber, guys. This one is grid chamber. Grid chamber of rectangular sedimentation tank. This is a cross section. Cross section is to be designed to remove the particle with a dia of 0.25 mm and the specific gravity is 2.7. The settling velocity of particle is estimated as 2.5 centimeter per second. The chamber is having a width of 0.5 meter, has to carry a peak wastewater flow of 9720 meter cube per second. Wait a minute, it is meter cube per day, giving the depth of flow as 0.75 meter, right? The depth of flow, it is given to us 0.75 meter and the discharge is 9720 meter cube per day, right? This is the question, guys, which we have to solve over here. Now let me tell you guys, you know that we can write it, the design discharge is nothing as our settling velocity multiplied by cross section area, right? So can I say that, guys, this area is equal to what? Design discharge upon settling velocity. Okay, sir. Now we have two things, guys. One is design discharge, which is 9720 meter cube per day, right? And the settling velocity, which is given to us 2.5 centimeter per second. 2.5 centimeter per second. Now you know that, guys, we have to convert this particular value as well as this one, right? Can I write it, guys? This one is equal to how much? कितना होगा जी? इसको डे से सेकंड में कन्वर्ट कर दीजिए. Can I write it, guys? It is 24 into 3600. Okay, sir. Now this is in centimeter. We have to convert it into the meter one. So can I write it, guys? This one is 10 raised to power minus 2. Okay, sir. So ultimately we will get the area, and you know that what is surface area? We can write it, guys, B into L. This is our surface area. Now what is the value of width over here? Width का value कितना दिया है जी? Width का value दिया है 0.5 meter. Okay, just put the value of B over here, which is 0.5 meter. You will get the value of L, and which is equal to 9 meter, right? Which is equal to 9 meter. यहाँ पे आंसर आ रहा है बच्चों 9 meter. And these three questions we have, guys, for the environmental engineering, and I have discussed all the solution for these three questions. So I think these are very easy one, and I think lot of time you have solved such type of problem in your practice session also. आपने कई बार ऐसे questions को बहुत बार practice करा होगा बच्चों, और कुछ भी नहीं थे. लगता ऐसा रहा था कि यार पेपर बहुत difficult आएगा, मगर ऐसा नहीं था. पेपर आसान ही था, मतलब हम बोल सकते हैं moderate ही था, right? So guys, दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे. ये हमारी एनालिसिस थी और होप सो आप लोगों को पसंद आया होगा, और डेफिनेटली यू विल गेट द पीडीएफ ऑफ सेशन 1 एज वेल एज सेशन 2, गाइस, इन अपकमिंग टाइम. मींस थोड़ी ही देर में आपको पीडीएफ मिल जाएगा 1 पेपर का भी और 2nd पेपर का भी बच्चों, और बड़े इफेक्टिव मैनर में. ठीक है, सो लेट मी टेल यू वन थिंग मोर, गाइस. वी हैव अ फ्री सेशंस फॉर ऑल ऑफ यू जो अभी आगे बढ़ना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं जी. उनके लिए आपके पास एक पोस्ट गेट गाइडेंस सीरीज चलने वाली है कि आप गेट के बाद करोगे क्या, है ना. आपका जो भी स्कोर आएगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग बात करेंगे बच्चों. आपका इसके आगे डिसीजन क्या हो,
राइट वो हम सारी चीज डिस्कस करेंगे। और ये सीरीज स्टार्ट हो रही है बच्चों 8th Feb से 7 बजे फ्री। ये फ्री सीरीज है जी, ये बात का ध्यान रखें, ये फ्री सीरीज है। आप सभी को बच्चों जुड़ना है जी, जुड़ना है। 8th Feb 7 PM सभी लोग आएंगे और ये सब आपको फ्री मिलने वाला है जी, कोई चार्जेस नहीं है, ताकि आप लोगों को आपकी मंजिल मिल सके और आपका उम्मीद का रास्ता हमेशा आपके साथ हो। ठीक है, तो बच्चों ये पूरी ग्रेडअप की टीम आपके साथ हमेशा है और हमेशा रहेगी। और नो डाउट बच्चों आपको ये गाइडेंस से बहुत फायदा होने वाला है, ये भी एश्योरिटी है। इट डजंट मैटर कि आपका स्कोर क्या आने वाला है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों। क्योंकि सर जरूरी नहीं है कि हर एक स्टूडेंट का क्रैक हो। डेफिनेटली देखिए बिल्कुल, देखिए आप सभी लोगों ने अपनी तरफ से बहुत मेहनत करी है, ठीक है ना, और सर ने भी पूरी तरह से आप लोगों को सोल्यूशन बिल्कुल पूरी प्योर तरीके से पूरी मेहनत करके सोल्यूशन पूरे दिन बना के हमने प्रोवाइड भी किए हैं। इसकी PDF भी आप लोगों को मिल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सोल्यूशन उसके अंदर लिखे होंगे, इसलिए लिखने की भी जरूरत नहीं है। अब 8 तारीख से शाम को 7 बजे 7 PM विल बी द टाइम यू विल बी स्टडिंग फर्दर, ठीक है, क्योंकि अभी आने वाला ES एग्जामिनेशन भी है सर, प्रीलिम्स भी आने वाला है, बिल्कुल प्रीलिम्स आने वाला है, ठीक है, तो उसके लिए भी यूजफुल हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद क्या कहते हैं, जो नेक्स्ट ईयर गेट देने वाले हैं उनके लिए बहुत यूजफुल है, ठीक है। देखिए अपने आप को हो सकता है कि ये आज हमारा नहीं था, लेकिन कल हमारा होना चाहिए, ये हमारे अंदर होना चाहिए, ठीक है। तो कल हमारा होगा, आज भले ही हमारा नहीं है। शायद जो गुजरा कल था वो हमारा नहीं था, शायद आज हमारा नहीं है, लेकिन आने वाला जो आना है कल है, बिल्कुल वो आने वाला जो कल है वो, क्योंकि वो हम डिसाइड करेंगे, वो हम डिसाइड करेंगे, ठीक है, ठीक है ना। तो मिलके डिसाइड करते हैं इसको। शाम को 7 बजे 8 फरवरी से गेट चैनल पे, हमारे ग्रेडअप गेट चैनल पे, ठीक है ना। और मन लगा के पढ़िए, कोई प्रॉब्लम होती है हमें बताइए, हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। जय हिंद, जय भारत।